Hello, and welcome to today's special game of the 100. It will be a great matchup against the two big team. It is the Northern Superchargers women's who will be playing against the Southern Brave women's. It has been a great tournament, the 100 2023, a great new format of cricket, and this is the match number 8. We are playing in the Aegis Ball in Southampton, England. The officials for today are Mark Neville, Sophie McLean, and Simon Hickins, the referee. And a great matchup. It is the Southern Brave women who have won the toss and they elected to field here. Talking about the playing 11 for the Superchargers, it is Mary Kelly, Jemima Rodriguez, Phoebe Lightfield, Holly Armitage, Alice Davidson Richards, Bless Heath, Georgia Wareham, Lee Dobson, Kate Kloss, Lindsay Smith, Grace Bollinger. And for Southern Brave, it is Danny Watt, Smithy Mandhana, Maria Butcher, Georgia Adams, Freya Kemp, Chloe Tyrone, Matlian Brown, Clea Moore, Anya Shorbsole, the captain, Rehana Southby, and Lauren Bell. So it is Jemima Rodriguez and Mary Kelly, who have come on to the bat first, and the first set will be bowled by Lauren Bell. The first ball has been a dot ball here, and it is Jemima Rodriguez, 11 matches in hundreds and 318 runs for these Northern Superchargers, and this best of 92. So quite a capable batter here would be putting on to get some great runs, and we are in Southampton. The weather is great, it's all sunny and good, so which we normally see in the 100 that it rains a bit, and rain is a problem which we are also seeing. Not happening this time. It is all sunny and well, and we hope that we can get a big match and a good matchup between both of them. Talking about the info and the live, it has been great, and points table wise, it is the Welsh Fire who are topping right now. Welsh Fire, I think they are redeeming themselves from the earlier two season. Then it is the Superchargers who are playing against the Braves. So NOS is on second, one match, one played, and just 2 runs of it. And sorry, it is 3 runs of Superchargers, mind you, and 4 balls have been done, and it is Rodriguez who is playing a first ball. She takes a single, cutting the ball towards the deep square for a double. So good running between the wickets by both the batters out there, and Bell bowling her last ball of her set. So I would say a very decent set by her. We are playing a good matchup in Southampton, and there was a slight run out chance because the running between the wickets have been very well. And yes, I was talking about the points table. I'm sorry, I just missed out of that. So it is Welsh Fire who are on the top of the table with 2 matches and 1 victory and 1 no results, which we saw yesterday. It is another Superchargers women who have played 1 after 1 match, and they have won that. And Southern Brave on the 3rd position with 1 win, 1 loss of their 2 games. So it is the matchup between the 2nd versus the 3rd. And as the tournament starts up, it is important for the points. A victory is important for the points table when you know that there are rain interrupting a lot of games. And with me right now is Karthik joining me at a good delivery, I would say. Ball which was going inside the wicket and just nearly missed out the stump, and Shorbsole bowling a brilliant first delivery. Absolutely, I think you hit the nail on the head when you said that points table is so important. Winning games is so important when there are so many rain abandoned games. Back-to-back games of the 100, 3 back-to-back games
of the women's 100 were abandoned due to rain, and we are certainly happy. It is 11 a.m. now in England. We are certainly happy to see the sun's shining and the sun smiling, and whoever be the two teams, well, we are very happy that we are getting a game to cover. So, well, rain, go away. Come again another day. Maybe when the match is in Manchester, you can rain at Lords probably. And somewhere else. And then when there is no cricket at Manchester, that time you can rain is what our request would be. The rain gods. And now there's a stumping appeal. Stumping appeal. The wicket keeper is very, very confident. And well, now someone, Freya comes from somewhere. I don't know how is she confident from cover, extra cover. The keeper is the only player who can be confirmed. The umpire is actually not willing to go. She said, I'm not going. But she was put under pressure by the bowling side. And eventually she's gone upstairs. So no, from the naked to the naked eye, doesn't seem like there was an outside edge. But we'll have to see. Did the back foot come out of the crease? The back foot has come out of the crease for sure. But did it get back in time? The keeper is very, very confident. And well, Jemima, she struggled actually. There was one ball which came in superbly from Anya Shrapsol, and she was almost bowled. And the next one she played and missed, and the next one again she has played and missed. So 3 back-to-back good deliveries from Anya Shrapsol. And Jemima, I don't think she'll be very sure either whether she knows that the back foot did come out of the crease, but did it get back in time? That is the more critical question to be answered. No outside edge. The Ultra Edge confirms that. And now is the foot down? Oh, can I see a shadow? It's very, very difficult to gauge there. Is there a shadow? Oh, it's touch and go. Is this a shadow? Has the foot touched the ground? It's a very good piece of stumping by the wicket keeper, but the third umpire will have to use all his gut instinct here. I think to the naked eye that looks not out. I think the foot has come back into the crease, but the more and more you look at it, you seem to think that there is a shadow of the foot on the ground. I think the benefit of doubt could go to the batter. Because we are not sure. If you're not sure, it's better to go with the batter than with the bowler, and rightly so, because a bowler always gets another chance to pick up a wicket. A batter, once she is dismissed, she's not going to get back to score in this game. Again, swing again. This is slogged away towards deep mid wicket, and she finds the gap. Does Jemima Rodrigues full and around middle? She got down on her knee and slogged it to the left of was it Chloe Tryon? I think it was Chloe Tryon at deep square leg, and she found the gap to perfection. And so the first runs of this particular set from Anya Shrapsol, and the moment that shot was hit, Shrapsol did not even bother to see where the ball was going. She immediately turned back, and yes, she's very unhappy with herself, because when you swing the ball, it's very important to know where your ball is landing. If your ball is going to land on the off stump, it is going to end up going towards the leg stump. Yes, that's a much better line, and that's cleaned up the... What a delivery from Anya Shrapsol! I was about to say, when you're swinging the ball, it's very, very important that you land well outside the off stump so that it swings back in and then comes in line of the stumps. Because if you line it in the line of the off stump, then it will slide down the leg side. Before I could even complete my sentence, Anya Shrapsol kind of read what I was trying to say, and no, jokes apart, she knew what she was bowling, and that was pitched wide outside the off stump, and the ball came back in her mind. Can't blame Jemima Rodrigues for this. This is like playing test match cricket. In test match cricket, as when you play a new ball bowler, you have to cater for the swing, and if the swing gets you, well, you just nod off to the bowler saying, well bowled, and just walk off. So Shrapsol strikes in her first set. Well, it's 10 for 1. Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat, as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. We value your feedback and encourage you to share your thoughts through our chat box. Get ready to elevate your fantasy team selection and take your gaming to the next level. Only on the Crick Kong app. Hi. Right, so then 11 for 1, as Phoebe Litchfield is the new player in, who has come on to bowl. To come on bat.
and Freya Kemp. No, Lauren Bell, beg your pardon. Lauren Bell has come on to bowl. Lauren Bell versus Phoebe Litchfield. We saw this a lot in the women's Ashes, and we'll have more of this now once Phoebe Litchfield comes on to bat. Is it going to be this ball? No, not quite. It's going to be Kelly who is who's on to that ball in a flash, and she comes back for a second 12 for 1. And Lauren Bell, she has pace. She was kind of inconsistent in the Ashes, but now she would have definitely got some confidence after that particular series, especially against the mighty Australians, where she did expose quite a few Aussies because they were not quite used to the pace that she was bowling and the angle with which she was bowling. If at all, she was inconsistent with her lines and lengths. That was the only thing. Otherwise, she was phenomenal in the women's Ashes. 12 for 1 so far in this particular 11 for 1, beg your pardon. After 13 deliveries, we were thinking that probably that might be signaled as a wide, but it's not been signaled as a wide. It was a short bounce way outside the off stump. And now Kelly getting ready to face Lauren Bell. Down the track she comes to counter the swing, and does not get to the pitch of the ball at all. And she gets a thick inside edge towards a square leg, and well, it is a single taken. Well, in the previous match, for the Southern Brave, she picked up 3 wickets, did she? She picked up 2 wickets, I think, and those were 2 catches that were being picked. And we just saw some wonderful cricket by the Southern Brave women as they managed to keep the Northern Superchargers under check. And now it's Northern Superchargers versus Southern Brave again. This was last summer where she picked up 3 wickets. Lauren Bell once again to finish off this particular set. 9 balls, 7 runs so far. Down the track on Phoebe Litchfield, but can only drive it towards cover. 15 balls gone. The Southern Superchargers are 12 for the loss of a wicket. Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. And Anya Shrubsole comes back to the attack now. It is Litchfield who is facing her mighty swing. As me and Karthik were talking again off camera and off mic this time, that these balls which she's bowling right now with so much swing here in the Southampton ground, that it is really hard for the batters to even get. As this time again, it is Litchfield swinging outside the off, and edge taken straight away by the keeper. And it is Anya Shrubsole, a great catch by the keeper Southby. And it is Anya Shrubsole who takes his second wicket, and Litchfield goes out on a duck. What a mighty show of swing this is here. And the ball is not that quick. Hence, the keeper is standing short, and she is also not doing any mistake whatsoever. So a brilliant spell, I would say. Just 2 wickets gone, and this is her second set, by the way, and not given a lot of runs as well. Just that 4 runs which she has given, and other than that, it is just 2 wickets in her 7 balls. Absolutely, and she was good against Jemima Rodrigues as well. She almost cleaned her up first, then she beat the outside edge, almost got her stumped, and then eventually cleaned her up. And it's 11 a.m. start in England, and mind you, 11 a.m. is never a good time to play cricket if you're a batter, because the ball is going to dart around and you have to see off those first 30 minutes. But unfortunately for the Northern Superchargers, their batting has gone south instead of north. And well, the captain, Holly Armitage, comes out to the middle, and this is something which the Northern Superchargers have to deal with, because if you had asked the captain at the toss, even the one batting would have said we have to see off the first 30 minutes. After the first 30 minutes, the pitch becomes better to bat on. The swing goes off. But in those first 30 minutes, if you lose 3-4 wickets, then nothing that can be done. Short delivery outside the off stump. It is punched straight to
point. No run, no chance of a run there. So quick summary then: Mary Kelly and Jemima Rodrigues coming out to bat, open rather. Jemima Rodrigues losing her middle stump to Anya Shrapsol, and Phoebe Richfield played just two balls of Anya Shrapsol and one ball of two balls of Anya Shrapsol. First she defended, second she nicked, caught behind to Rihanna Southby. Fuller again more swing. It has worked towards mid-on. No chance of a run there. Anya Shrapsol, when she bowls like this, she is unstoppable. And I'm wondering whether the captain, she's the captain herself, I beg your pardon, whether she would want to bowl all the 20 balls at a stretch. As per the rules of this 100, a bowler can bowl a maximum of 20 balls. Now, she has already finished 9. She's going to bowl her 10th. May not be a bad decision to continue the remaining 10 because she's swinging the ball so much. It may not be a wise decision to keep her for the last overs. End of another end. It's 20 balls done. Well, the Superchargers are 13 for the loss of 2 wickets. Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. We value your feedback and encourage you to share your thoughts through our chat box. Get ready to elevate your fantasy team selection and take your gaming to the next level. Only on the Crick Kong app. हाय, मेरा नाम है बाबा शीश नंदा और आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिक कॉन्ग ऐप। क्रिक कॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा In the air, chance of a run out, and that missed as well. Holly Armitage gets 2 chances on the same ball. First, she swings it wildly, gets a thick inside edge, and the ball almost carries to mid-on. And then she calls for a quick single, and the fielder misses a try at the bowler's end. So yes, Anya Shrapsol, as expected. Now she's bowling continuous set of 10 balls. So she bowled the first set of 5 balls. That's from ball 6 number 10. Then from ball 16 to 20, she bowled set number 7 to 10. And now from ball number 21 to 25, she's going to bowl set 11 to 15. And then she might switch to the other end and bowl her last set of 5. But so far, she's been brilliant. 12 balls, 6 runs and 2 wickets. Both the wickets have fallen to Anya Shrapsol. And well, this one just nips back in to... Okay, that's a 10th dot ball that she has bowled because this was swinging down the leg side and Mary Kelly looked to flick it but missed and the ball just clips her pads and drops down to the leg side. What a fantastic piece of bowling this is. In her 13 balls, she has bowled 10 dot balls and in the remaining 6, the 6 runs have all come in the remaining 3 balls. Now, something had to give and it has given. Is it a boundary? Oh, it's a catch put down. It is a catch put down. It could have been 3 in 3 sets for who is this? Is this Danny Wyatt? Yes, it is Danny Wyatt. Well, I kind of got confused because I remember I saw her in the Ashes, but I was not remembering her name, and that's why I was looking at the scorecard. And by that time, Shaurya pointed out that I can see her name Wyatt mentioned on her jersey. But jokes apart, this should have been taken full and around middle. Mary Kelly looked to swing it to the leg side and spooned it towards deep mid wicket. Danny Wyatt did all the hard work, came charging in from deep mid wicket, took the catch, but while diving her, I think elbow hit the ground and the ball popped out. Shrapsol is not happy, but given that Danny Wyatt and Shrapsol are England teammates, she did not say much. She just raised her hands to the heavens and said, "Come on." In fact, the hand has not even hit the ground. It has just gone straight through, in and out, and she's not a happy chappy. Now, this one in, swing again, swung towards deep mid-wicket. Once again, under the hammer is Danny Wyatt. Will be just a single, 25 balls done. While the Superchargers are 17 for the loss of 2 wickets. Anya Shrapsol finishes her set, and it is 15. And I think, is that a super sub? Well, we'll let you know in a while. The umpire has made an indication, but 25 balls done then, 17 for the loss
of 2 wickets are the Northern Superchargers, and that's the end of a very, very poor power play for the Northern Superchargers. And we are just waiting to see what was that signal from the umpire. He got a white card out, and he was signaling something. Now, I'm not sure what was that. Was it a substitute or something? No, it's not a substitute. But the post power play is done, and now Claude Ryan comes on to bowl on the pads, worked away towards square leg, and it is a single. 26 balls gone, 18 for 2. Yes, and at this point, Armitage and Kelly both are facing the repercussions of the wicket of Jemima Rodriguez and Litchfield. Yeah, because what a brilliant spell, I would say, by Shobspol. She has bowled her best. She has made sure that her team, wouldn't go for a lot of runs, and it is just 19 on the board and 27 balls are done. So, nearly 6 sets are done. Just 3 balls remaining for that set to be done, and it is Tran who's bowling. Now spin spell coming in, but this time again towards the covers. There was a fielder there. She tried her level best to catch that. It was Adams who jumped on and tried to take the catch, but cleared the inner circle, and that could have been a great catch if that effort would have done it to 100%. I think she went for the dive and then she mistimed it, so she did not put her arm through, but nevertheless a boundary here for Kelly. So 23 runs on the board, 28 balls are done. 2 very important wickets, I would say, for the Southern Braves. And Southern Braves now, I mean, they would have the confidence in this innings and this 100 balls here, because they have the wicket. The runs aren't coming on a great pace here for the Northern Superchargers. And this is a great bowling effort by the Southern Braves. 30 balls are done. It is 25 for 2 wickets lost. Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. We value your feedback and encourage you to share your thoughts through our chat box. Get ready to elevate your fantasy team selection and take your gaming to the next level. Only on the Crick Kong app. चलिए 30 गेंदें हो गई हैं, 25 है स्कोर यहाँ पर 2 विकेट के नुकसान पर, और ये बिल्कुल भी शुरुआत नहीं चाहिए थी यहाँ पर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को, लेकिन खैर जो हुआ सो हुआ। और यहाँ पर हॉली आर्मिटाज के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि कप्तान अगर सामने से लीड करेगा या करेगी तो बाकी खिलाड़ी जो है उन्हें वैसे ही फॉलो करेंगे। छोटी गेंद, और यहाँ पर नई खिलाड़ी आई है केलिया मूर, जो लेग स्पिनर है। छोटी गेंद पहली गेंद पर और उसे पुल कर दिया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। और हॉली आर्मिटाज का यहाँ पर प्रयास रहेगा कि वो यहाँ पर तेज तरह रन, थोड़ी बहुत यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट करे, क्योंकि मोमेंटम पूरी तरह से यहाँ पर सदर्न ब्रेव के पास है, और उसे वापस लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या तो आप नियति पे भरोसा करके आप थोड़ा टाइम वैसे ही खेल सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा चलिए, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, खराब टाइम में बीत जाएगा बीत जाएगा बीत जाएगा। लेकिन वो खराब टाइम अगर 100 बॉल में से 90 बॉल रहा तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपके पास समय ही नहीं बचता, तो फिर आप नेपोलियन जैसा अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखोगे। वैसे वो नेपोलियन की कहानी कितनी सच है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नेपोलियन के जमाने का नहीं हूं, पर सुना है कि उन्होंने अपने हाथ में ऐसा लकीर खींचकर अपनी किस्मत खुद बनाई थी। लेकिन हम सब तो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स हैं। फिलहाल यहाँ पर हॉली आर्मिटाज ये सारे चीजों का मिश्रण करके एक काउंटर अटैकिंग नॉक खेल सकती है। वो ये सीधी साधी अगर बात की जाए यहाँ पर, क्योंकि आप अन्य शब्दों को तो अटैक करने से रहे, तो आप बाकी बॉलर्स को अटैक कर सकते हैं। और उसमें से केलिया मूर यहाँ पर दबाव में आ रही है। 3 गेंदों में 8 रन और बहुत ही बढ़िया ड्राइव। क्या स्वीपर कवर वहां पे मौजूद है? जी हाँ है। 4 गेंदों में 9 रन दिए हैं अभी तक इस पर्टिकुलर सेट में। 34 गेंदों के बाद 34, 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स। और ये नॉर्थ वर्सेस साउथ का मैच है, नॉर्थ वर्सेस साउथ। और फिलहाल साउथ जो है नॉर्थ के ऊपर अपनी पकड़ दबाए बैठा है। पहली बार है इस पारी में यहाँ पर
एलबीडब्ल्यू अपील नहीं की गई, क्या इनसाइड एज था वहां पर पता नहीं, क्योंकि गेंद जो है पैड को लगकर लॉब कर गई कीपर के ऊपर से शॉर्ट थर्ड की तरफ। कीपर और बॉलर एक दूसरे को देखते हुए, लेकिन कोई भी रिव्यू के बारे में बात नहीं करता हुआ। और इसी के साथ ये सेट समाप्त 35 गेंदों के बाद। यहाँ पर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स 34 2 विकेट के नुकसान पर। Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आमिताज और केली के पास एक ऐसी चीज है जो जिसे वो टारगेट कर सकते हैं, और वो है दूसरे बॉलर्स। यहाँ पे जॉर्जिया एडम्स अभी आई है अपना सेट डालने के लिए, पर अगर हम बॉलिंग की बात करें तो आन्या श्रपसोल ने एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया है। दूसरे बॉलर्स, हाँ खैर उनने रन्स तो नहीं दिए हैं इतने, पर अभी भी गेंदे बाकी है। हम 37th बॉल पे है, तो 37 बॉल में 37 रन आए हैं। ये एक अच्छा रन रेट तो नहीं रहेगा 6 का, जो नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स जिससे खुश रहेंगे, पर अभी तक आन्या श्रपसोल ही वो एक विकेट टेकिंग डेंजर दिखाई दे रही है। और ऐसे ही आमिताज थोड़े चीकी शॉट्स खेल के स्वीप करके बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ रन निकालने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, और यही करना पड़ेगा उन्हें दूसरे बॉलर्स को टारगेट। और ऑन दी अदर हैंड मैं कहूँगा कि सदर्न ब्रेव को यहाँ पे अपने दूसरे बॉलर्स से भी विकेट चटकाना शुरू करना पड़ेगा। जो मोमेंटम यहाँ पे श्रपसोल ने दिया है उसे एक कंटिन्यूएशन देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आमिताज और केली 45th बॉल तक भी टिके रहते हैं यहाँ पे, वो स्लोअर गेम खेलते हैं, तो उसके बाद वो एक चार्जिंग माइंडसेट के साथ जा सकते हैं और एटलीस्ट 130 एंड 140 तक वो पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है ये 100 में लैटर हाफ ऑफ बॉल्स में हाई रनिंग हो सकती है। यहाँ पे केवल 4 रन आते हुए इस सेट में, और 42 रन है ऑन बोर्ड नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स, 5 रन आते हुए और 42 रन है सुपरचार्जर्स के स्कोर बोर्ड पे 40 बॉल्स डाल के। Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. We value your feedback and encourage you to share your thoughts through our chat box. तो ठीक है, यहाँ पर और पुल कर दिया है सीधा डीप मिड विकेट। वापस शायद डैनी वाइट या जी वही है वो, और क्लोट रायन यहाँ पर कंटिन्यू करती हुई 5 गेंदों में अभी तक उन्होंने 8 रन दिए हैं। ये उनका सेकंड सेट है फिलहाल। लेफ्ट आर्म राउंड 2 विकेट से 6 गेंदों में 9 रन। और एक ऐसा लग रहा है कि कोई एक शरारती बादल आ गया है वहां पर, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन ऐसे लग रहा है थोड़ा ओवरकास्ट हो गया है, क्योंकि अभी धूप छिड़की हुई थी वहां पर, खिली हुई थी, पर अब ऐसे लग रहा है थोड़ा, या तो मेरी नजरें कमजोर है। क्या कहते हैं सॉरी, आपको लग रहा है थोड़ा डार्क कमजोर नहीं है आपकी, डार्क काफी हो चुका है ना। हाँ, और तो क्योंकि मुझे याद है मैं जब आया था मैच स्टार्ट करते वक्त, तो इतना सनी था कि प्रॉपर समर्स की फील दे रहा था। हाँ। पर अभी ऐसा लग रहा है कि ये मैच मुंबई शिफ्ट हो गया, क्योंकि मुंबई में ही इतना आउटकास्ट है अभी फिलहाल। हाँ। पर वही बात है कि ये एक इंग्लिश वेदर जो नॉटीनेस है उनकी, हमने देखा है कि कभी भी कुछ भी आधे घंटे में बदल सकता है। मुझे सिर्फ आपसे यही एक शिकायत है, आपने ऐसे क्यों बोला कि मैं जब आया था, आप ऐसे बोलते थे कि हम आए थे, तो अभी हमारे श्रोताओं को पता चल गया कि आप पहले आए और मैं लेट आया, और लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं टाइम पे क्यों नहीं आया। वैसे मुझे शिकायत रहेगी इस बात की, लेकिन हाँ जोक सपाट यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि स्टंपिंग मिस हुई है, लेकिन स्टंपिंग से बच गई वहां पर। हॉली आमिताज आज बहुत किस्मत लेकर आई है, क्योंकि डाउन द ट्रैक आई नहीं अब एक स्काई कैमरा दिखा रहे हैं यहाँ पर, और
सिर्फ बादल है और वो बारिश के बादल नहीं है, तो ओवरकास्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा क्लाउडी है, तो यहाँ पर बारिश के तो कोई चांसेस है नहीं, टच वुड। तो प्रीवियस बॉल पे आर्मिटाज जो है डाउन द ट्रैक आई, बीट हो गई और यहाँ पर स्टंपिंग आ रहा था वहां पर रियाना साउथबी के लिए, लेकिन उनकी किस्मत देखिए, आर्मिटाज की गेंद उनके पैर को लगकर डिफ्लेक्ट हो गई। पर इसी के साथ 45 गेंदें समाप्त। 45 गेंदों के बाद यहाँ पर स्कोर है 49, 2 विकेट के नुकसान पर। Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. We value your feedback and encourage you to और अभी 47 रन्स आ चुके हैं 46 डिलीवरीज में। मैं कहूँगा थोड़ा स्लो, थोड़ा नहीं काफी स्लो यहाँ पे नदन सुपर चार्जर्स की तरफ से। उन्हें बाउंड्रीज की सख्त जरूरत है और जैसे मैंने कहा लॉन्ग ऑफ की तरफ मारते हुए जो मिड ऑफ फील्डर थे उन्होंने डाइव मारने की कोशिश की, पर वो शख्स क्या मैं कहूँगा कि वो नहीं पकड़ पाई वो बॉल को और बॉल उनके थ्रू पास होते हुए और ये बाउंड्री देर आई दुरुस्त आई। मैं कहूँगा यहाँ पे बाउंड्री कैली के हाथों से, मैरी कैली के हाथों से, और वो काफी देर से पिच पे है, उन्होंने ओपन किया है और यहाँ पे इस बार सीधा खेलने की कोशिश और एक बाउंस होके सीधा क्लिया मूर की हाथों में जाते हुए 8 गेंदे डाल चुकी है, वो 13 रन दिया है और ये एक अच्छा स्पेल में उनकी तरफ से बोलना चाहूंगा। यहाँ पे हर बॉलर चाहे विकेट नहीं ले रहे हो, चाहे वो उतना विकेटिंग प्रेशर ना डाल रहे हो जैसे डाला गया था पहले शॉर्ट्सपुल अनया के द्वारा, वो वैसा नहीं हो रहा है। पर खैर रन्स नहीं आ रहा है यहाँ पे, रन्स काफी कंट्रोल में है। 50 गेंदे यहाँ पे होने वाली है, आखिरी गेंद उसके लिए इस बार लेग साइड की तरफ डाल दिया, पर अगेन एक डॉट बॉल के साथ हुई यहाँ पे सेट की समाप्ति। 52 रन्स ऑन द बोर्ड है नदन सुपरचार्जर्स के। revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. We value your feedback and encourage you to share your thoughts through our chat box. Get ready to elevate your fantasy team selection. Right, 53 for 2 then after 51 deliveries, and it's a very good recovery from the pair of Armitage and Kelly. They have added 41 runs so far in 34 balls. So 41 runs in 34 balls. So they have kind of taken their team onto a recovery mode. But now probably comes that time when they will start to question themselves. When is that moment when we start to go on all-out attack? I am saying that this is a 100 game, which is of 100 balls. But where do you see this? Just 4 boundaries. Just 4 boundaries in 52 balls. And that's something which they would not be liking. They want to get more boundaries now. And they're going at roughly 1 run per ball. That's all it is. Normally, teams at this stage go at 1.5 runs per ball, 1.7 runs per ball. Try and get the 2 runs per ball mark. Only then, after 100 balls, you'll get close to 190, 200. Now, at this stage, even if you double this total, you're going to get 110 at this stage. So, it is something, a bit of a double-edged sword, especially for a skipper. Holly Armitage, and there she is. Well, she's either bowled or stumped, one of the two. I think she's been stumped. Now, this one stayed a little low as well, and now, is that a timeout being indicated by Georgia Adams? No, I think it's something else. She was signaling something to her dugout, that is the Southern Brave dugout. Off spinner, tossed up outside the off stump. Yes, that stayed low. That stayed low.
Holly Amitas came down track and looked to swing across the line. Now the bat went, but the ball went beneath the bat. And easy stumping for Rihanna Southby, who completes her second dismissal of this innings. So 54 balls gone, then 55 for 3 as Holly Armitage takes a long time to walk out of the ground. And it'll be interesting to see who has come in, Alice Davidson Richards or Bess Heath. Because right now, yes, it's Alice Davidson Richards. Right now, they need kind of someone who can just mix caution with aggression. So 54 then, 54 balls have been bowled and 55 for 3 as well. I think, is this a timeout? Yes, they have taken a strategic break, I think, at this point in time. We'll be back when the innings resumes. Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. We value your feedback and encourage you to share your thoughts through our chat box. Get ready to elevate your fantasy team selection and take your gaming to the next level. Only on the Crick Kong app. हाय, मेरा नाम है बाबा शीश नंदा और आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिक कॉन्ग ऐप। क्रिक कॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिक कॉन्ग ऐप और सुनते रहिए। Right, 56 balls now, 56 for 3. And they have come back to again, that's one run per ball scenario where nothing is actually quite going. The partnership between Mary Kelly and Holly Armitage was 43, but it consumed a fair bit of balls, 43 from 37. With the ball swinging, it is difficult to bat, but it's not as if the pitch is slow. The pitch has slightly some inconsistent bounce, but they could have batted better than run a ball. There was never a point in time where they looked to accelerate. And as Shaurya mentioned, it's not just Anya Shrapsol who has done the damage. She has taken the 2 wickets, no doubt. But look at the other figures. We'll tell you the other figures. Lauren Bell, 10 balls, 7 runs. Chloe Tryon, 10 balls, 12 runs. Kelia Moore is currently in her third set, 14 balls, 16 runs, 13 balls, 15 runs, beg your pardon. And Georgia Adams, 10 balls, 10 runs. So there has been no bowler who has been attacked. I can understand you did not attack Lauren Bell and Anya Shrapsol because the ball was swinging. But then after that, you could have looked to attack Tryon, Moore, and Georgia Adams. So, 58 for 3 then. Final delivery of this next set from Moore comes down the track. Does Mary Kelly and works it towards deep mid wicket for a single. 60 balls bowled, 59 for 3 are the Northern Superchargers. Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. We value your feedback and encourage you to share your thoughts through our chat box. Get ready to elevate your fantasy team selection and take your gaming to the next level. Only on the Crick Kong app. Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat. And it's the Richards, Alice Davidson Richards, who is on the strike now, just 2 runs. She's the new batter, and she has to now change the momentum as just 60 runs have arrived. I mean, 60 runs are a lot, but in 62 deliveries isn't the right pace, I would say. But here,
good running between the wickets by Mary Kelly and Alice Davidson Richards here. 3 runs taken off that delivery, and it is Chloe Tyron who's bowling her who's bowling her third set right now. She has bowled 12 deliveries and 15 runs she has given. So at this point, we were talking about the bowlers. They have done a brilliant job, I would say, as all of them. Lauren Bell, 10 balls and just 7 runs given. Anya Shrubsole bowling her 15 deliveries and 2 wickets in just 9 runs. Chloe Tyron now 14 balls of her are done. Yes, no, 13 balls have done, and she has given 15 runs. And Clea Moore 15 balls, 17 runs, and Georgia Adams 10. So none of the bowlers have been picked up there by the batters of the Superchargers. This time, it is Kelly who goes towards the cow corners region, and a boundary nonetheless. And a boundary comes in the last ball of Tyron's set. It is 67 for 3, and the boundary would be some hope here of more boundaries to come. That would be the plan of the Northern Superchargers. Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game. Chali. So it's now 67 or make that 71 for 3 after 66 balls as Adams now bowls it down the leg side, and Mary Kelly just sweeps it behind square for a boundary. She actually took it on the full and she got the boundary behind square leg. So 71 for 3 after 66 balls, 34 balls left. At least the least that they can try is try and get to 140. That's 2 runs per ball. From here down the track, she comes again and just to the low bounce and sweeps it to Danny Wyatt at a deep mid wicket. 72 for 3 after 67 balls, where Georgia Adams 12 balls, 15 runs and 1 wicket, 2 dot balls so far. And so far they have used 5 bowlers: Lauren Bell, Anya Shrubsole, Chloe Tryon, Kelia Moore, and Georgia Adams. Oh, appeal for a catch. The keeper is confident, but the umpire says no. Well, will Rihanna Southby convince her captain, Anya Shrubsole, to go for the catch? The bowler is not sure, but the keeper says, yes, I'm sure she nicked it. I'm sure she nicked it. What does? And yes, the review has been taken by Anya Shrubsole. And yeah. I mean, it is a very close call, and it is back to back. I mean, Mary Kelly is seeing her partners go one after the another, as she started as an opener here, but she has seen the end of Jemima Rodriguez, Phoebe Lynchfield, Holly Armitage, the captain. Oh wait, I'd like to stop you here. Well, the Ultra Edge detects a spike, and Alice Davidson Richards has to go. And well, it is wicket number 4 for the Southern Brave. And what a review from Southby, that is Rihanna Southby, because it was a short ball outside the off stump, and Davidson Richards looked to cut but missed it, and then the keeper collected, and the keeper immediately went up in an appeal. The bowler was not that sure, and then the keeper looked at her captain, that was Anya Shrubsole, at short third. She asked her, and she said, yes, I'm confident that she has nicked it. And well, the captain went with her bowler, and they decided to go for the review. And yes, everyone is congratulating the keeper only because the bowler had nothing to do on it. Georgia Adams had no clue that there was a nick on that. But wicket keepers would be there, and there goes Anya Shrubsole just walking past her and telling her, well done, Mike, and you heard the noise. Yes, and Southby, what a day for her. She has gotten a stumping and 2 catches, and the earlier catch was also a brilliant one. So she is doing a tremendous job here behind the stumps, and that has added a lot of importance. And I mean, 4 wickets down, and in the 3 of them, it has been the I would say assist by Southby, and that has helped the Southern Brave a lot. And this time it is now Mary Kelly who opened, and now she is seeing a 4th partner for her. It's Bliss Health, and they have a tremendous I mean a huge mountain to climb here. If they have to reach at least around 130 to 140, as 69 balls are done, it will be the last ball of Adam's spell, and it would be just a
a couple of runs. Yes, there has been a try of his cheeky single. Yes, it has been taken. A good dive to take that run. It will be the end of the set. It is 75 for 4 after 70 balls. Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. We value your feedback and encourage you to share your thoughts through our chat box. Get ready to elevate your fantasy team selection and take your gaming to the next level. Only on the Crick Kong app. हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिक कॉन्ग ऐप। क्रिक कॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ Right, 71 balls, 76 for 4, and Mary Kelly seems like it has been an age when she came out to bat. She came out to bat facing the first ball, and she's still there after 71 balls. But after that, she has seen Jemima Roderick, Phoebe Litchfield, Holly Armitage, and Alice Davidson Richards walk back to the pavilion with almost next to nothing in front of them. Only Holly Armitage gave some kind of a support to her, involved in a 43-run stand. But otherwise, it's been just a one-woman show. Now again, she gets down and across towards Lauren Bell, who's come back for her third set, and she gets a single, 77 for 4. They don't need a sixth bowler, but if at all they would want to have a sixth bowler, I'm just thinking about any particular options. Freya Kemp has not bowled so far. So Freya Kemp and Maitland Brown, these are the two options that Anya Shrubsole can think about if they want a sixth or seventh bowler. As of now, they don't need it. 72 balls, 77 for 4. Length ball, slower in pace, outside the off stump. Bess Heath gets back and just punches it straight to backward point. No chance of a run there. The pitch is slightly slow, but for that, they need at least 120 on the board, 120, 130. The other day, when Smriti Mandana was batting, and even Haley Matthews was batting, they got what? 165. They were looking at 180, 200 at one stage. But looking at this pitch, maybe 120, 130 would do a world of good to the Northern Superchargers. Slogged in the air, does not carry to long on. Maya Bauscher at long on there, and it will be just a single. 74 balls, 78 for 4 are the Northern Superchargers. So 26 balls. Well, at least you look at doubling every ball, and it's a small boundary. It's not a huge boundary. The boundary ropes are pulled in pretty much inside. So, well, you try and get to 2 runs per ball and get to 130, as close as 130 to possible, and then see where does it take you. Final delivery of this set from Lauren Bell. Short ball, seeing the batter charge at her, and Kelly looks to pull but misses. 75 balls gone, 78 for 4 are the Northern Superchargers. Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. We value your feedback and encourage you to share your thoughts through our chat box. Get ready to elevate your fantasy team selection and take your gaming to the next level. Only on the Crick Kong app. And now it's Mary Kelly, who is on 38 runs of 37 balls. So I wouldn't say she has been. He has put forth a good performance here, but it is a slow one with a strike rate of 100. And Bess Heath is partnering her now, 3 of 4 by her. And Clea Moore is now bowling. It's her 17th delivery. This time again towards the cow corners region. The ball was hit there, but the fielder there, it would be just a single.
At this point, it is now or never for the Superchargers. They have to start taking those risks. After 2 deliveries, it would be just 20 or odd, so 22 odd so ball now to make it 21 to end this innings, and runs are 79. So not, I would say not a lot of runs, and it would be difficult for the bowlers of the Northern Superchargers to put forth a show to defend them. But this time, it is Heath who clears the infield towards the covers region, and it would be a good shot to end the set. It is 83 for 4 after 80 balls. Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. We value your feedback and encourage you to share. 80 गेंदों के बाद 83 पर पहुंच गया है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर. अब क्लोट रायन आएंगी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट टू मैट मेरी केली को, और ये स्टंप्ड. यहाँ पर ये ऑलरेडी उन्होंने विकेट ले लिया है, और यहाँ पर एक और स्टंपिंग, 5 में से 4 जो है यहाँ पर रियाना साउथबी ने यहाँ पर इन्वॉल्व हो गई है. फ्लाइटेड गेंद थी क्लोट रायन द्वारा, और ये लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से आती हुई, और मेरी केली ने इवेंचुअली आखिरकार एक लंबी पारी खेलने के बाद यहाँ पर अपना विकेट गवा दिया. आगे आकर इनसाइड आउट खेलना चाहती थी कवर की दिशा में, लेकिन पूरी तरह से चूक गई और वापस जाने का कोई चांस भी नहीं था, क्योंकि अगर स्टंपिंग मिस भी करती, मान लीजिए फंबल भी करती, तो भी ये वापस नहीं आ सकती थी. काफी आगे आ गई थी और मेरी केली जा रही है. अब फिलहाल तो कहना ही पड़ेगा एक अच्छी पारी, क्योंकि जब इस पारी में 2 ही खिलाड़ियों ने 20 क्रॉस किया है या डबल डिजिट पे पहुंची है, उस हिसाब से तो 39 काफी अच्छा स्कोर है. लेकिन सैडली हमें ऐसा लगता है कि वो काफी नहीं होने वाला. जॉर्जिया वेरन नई बल्लेबाज है अब क्रीज पर, और प्रॉब्लम ये थी मेरी के लिए कि बॉल ना टर्न हुई, ना फास्ट गई, ना स्लो आई. नॉर्मल पेस की गेंद थी, सिर्फ सीधा गई, तो वो सिर्फ उन्होंने लाइन गलत पकड़ी थी. अगर वो स्ट्रेट जाती तो शायद वो कनेक्ट कर जाती. पर ये आज रियाना साउथबी का दिन है. 4 डिसमिसल्स है, जिसमें से 2 कैच और 2 स्टंपिंग अभी तक उन्होंने चटकाए हैं. जॉर्जिया वेरन ये बड़ी हिट्स लगा सकती हैं, नो डाउट, बट यहां से कितना ही कर सकते हैं वो. 82 गेंदों में 84, 5 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स. बेस्ट हीथ अब सामना करेंगे क्लोट रायन का, अपने फील्ड का निरीक्षण करते हुए. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से छोटी गेंद, उसे कट कर दिया है कवर्स और पॉइंट के बीच में से, और ये जाएगा चौका. आखिरकार एक काफी लंबे अंतराल के बाद एक चौका आता हुआ. सिर्फ ये 8वां चौका है इस पारी का, और अभी तक एक भी 6 नहीं लगा है. और ये बेस्ट हीथ पहुंच गई हैं 11 रन 7 गेंदों में. 2 चौके यहाँ पर जड़ दिए हैं, और छोटी गेंद थी यहाँ पर. और 88, 5 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स. अगली गेंद फ्लाइटेड गेंद, और आगे आकर खेल दिया है लॉन्ग ऑफ. और ये लॉन्ग ऑफ तो छोड़िए, मिड ऑफ को पार नहीं कर पाई है वो. स्मृति मंधना ने एक आसान सा कैच जीत लिया है, और ये नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स नॉर्थ में तो आ ही नहीं रहे, वो साउथ में ही जा रहे हैं. वो जाना चाहते थे कश्मीर, लेकिन पहुंच रहे हैं कन्याकुमारी. और यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है उनके लिए. सिर्फ एक बीच में एक साझेदारी थी 43 रनों की, पर अब तो बेस्ट हीथ भी जा गई है. टॉप 6 अब डगआउट के अंदर हो गए हैं. 84 गेंदों के बाद 88, 6 विकेट के नुकसान पर. और अब सारे बॉलर्स हु कैन बैट हैं, यानी बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, और नई बल्लेबाज आई है लिया डॉप्सन, जो बल्लेबाजी करने आएंगी जॉर्जिया वेरम के साथ. नंबर 8 पर 6 विकेटें गिरी हैं. और क्लोट रायन का अगर ये स्पेल की मैं अब बात करूं, अभी तक उन्होंने डाले हैं 18 गेंदे और दिए हैं 25 रन और लिए हैं 2 विकेट. माफ कीजिएगा, 19 गेंदे 25 रन और 2 विकेट. आखिरी गेंद है ये उनके सेट का. ये पहले खिलाड़ी बनेंगी जो अपने 20 गेंदों का स्पेल समाप्त करेंगे. फिर 5 आनिया श्रॉप्सोल डालेंगी, 5 लॉरेन बेल, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ 5 जॉर्जिया एडम्स. पर जो 86 to 90 है, मेरे ख्याल से जॉर्जिया एडम्स ही यहाँ पर डालने के लिए आएंगी. और ऐसा कुछ बाइफर्केशन अगर हम करें तो कुछ
पार्शियलिटी नहीं है। अन्य श्रपसोल पेस बॉलर 2 विकेट, क्लो ट्रायन स्पिन बॉलर 2 विकेट, जॉर्जिया एडम्स स्पिन बॉलर 2 विकेट। फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप एंड ऑलमोस्ट चिप्ड बैक टू द बॉलर था वो, क्लो ट्रायन के जस्ट आगे गिर गई गेंद। 85 गेंदों के बाद यहां पर 88 पे 6 सदर्न ब्रेव। Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. We value your और यहाँ पे जॉर्जिया एडम्स अपना अपनी सेट डालते हुए 89 रन आ गए हैं और वेरहम और लिया डॉब्सन अभी बैटिंग कर रहे हैं। जॉर्जिया वेरहम, तो आई मीन जॉर्जिया वर्सेस जॉर्जिया का गेम है, पर यहाँ पे मैच तो डाउन साउथ जा रही है नॉर्दर्न चार्जर्स के लिए, और साउथ की तरफ सदर्न ब्रेव की तरफ तो मैच जरूर जा रही है। ये एक मैं कहूँगा एक काफी अच्छी और काफी टाइट बॉलिंग परफॉर्मेंस या बॉलिंग इनिंग्स है। फील्डिंग में ज्यादा गलतियां हमें दिख रही नहीं है। हाँ खैर एक कैच ड्रॉप जरूर हुआ था, पर इस बार ड्रॉप नहीं करेगी। एडम्स खुद अपना कैच लेने गई, बॉल को सीधा मारने की कोशिश की डॉब्सन ने, और कोई यहाँ पे गलती नहीं है। 7वां विकेट जाते हुए डॉब्सन 1 रन पे जाते हुए 90 रन आ गए हैं। तो ये एक मैच पूरी डाउन साउथ में बोलूंगा जा रही है अभी नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के लिए। केवल 90 रन आए हैं जरूर, पर क्या वो इनफ होगा, क्या वो एक अच्छा टोटल होगा? क्योंकि अभी बॉलर्स पे बहुत मतलब काफी ज्यादा प्रेशर होगा सुपर चार्जर्स के इसे डिफेंड करना। ये हम 100 का गेम देख रहे हैं, और ये T20 में भी काफी नहीं होता है। 100 में तो हम बहुत ब्लास्टिंग इनिंग्स देखते हैं, काफी फास्ट गेम और काफी ज्यादा रन देखते हैं काफी कम टाइम में। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के लिए। केट क्रॉस अभी नई बैटर आते हुए, क्या वो 100 का मार्क भी पहुंच पाएगा? अभी वो भी ऑन डाउट्स है, क्योंकि विकेट 3 बाकी है। और जिस परफॉर्मेंस में अभी जॉर्जिया एडम्स लग रही है, वो और एक विकेट लेने की काफी कोशिश करेगी यहाँ पे, क्योंकि अभी ये तो टेल एंडर्स है। ये टॉप ऑर्डर बैटर्स भी नहीं है जो हर बॉल को हिट करते हैं, और इनसे मिस्टेक्स, टेल एंडर्स से मिस्टेक ज्यादा होते हुए देख सकते हैं। इस बार डाइव किया था एडम्स ने, पर मिस कर दिया। खैर 1 रन के साथ हुई ओवर की समाप्ति। 91 फॉर 7, 90 गेंदों में है नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स। Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. We value your feedback and encourage you to share your thoughts through our chat box. Get ready to elevate your fantasy team selection and take your gaming to the next level. Only on the Crick Kong app. हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा और आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट। अन्य शब्सोल अब आ रही है गेंदबाजी करने के लिए। 91 गेंदों में 91, 7 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स 16 गेंदों में 9 रन दिए उन्होंने और 2 विकेट अर्जित भी किया। अब सच्ची में ऐसा लग रहा है ओवरकास्ट हुआ है, क्योंकि एक घनन घिरा आए बदरा पर घन घोर खाए छाए भदरा, ये तो पता नहीं ये मैं गा सकूंगा कि नहीं, पर सच्ची में ऐसा लग रहा है कि एक साइड ऑफ द ग्राउंड जो है वो काफी जी हाँ ये ओवरकास्ट ही है। ये काले बादल दिख रहे हैं यहाँ पर। एक किसी का तो हेलमेट था, शायद केट क्रॉस का हेलमेट था, उसमें क्लियरली दिख रहा था कि काले बादल छा गए हैं। और
ये बखत के पहले खुशी तो हम नहीं चाहेंगे यहाँ पर कि मैच खत्म होने से पहले ही बारिश गिरे। मैच खत्म होने का जितनी चाहे बारिश गिर जाए कोई बात नहीं यहाँ पर कम से कम ये मैच हो जाए। फुल अर्लिंग की गेंद उसे स्विंग कर दिया डीप मिड विकेट की तरफ, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। तो 93 गेंदों में 93 है स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। और केट क्रॉस खेल रही है 2 पर और जॉर्जिया वेरम 3 पर। जॉर्जिया वेरम केट क्रॉस दोनों चौके मार सकते हैं, दोनों सिक्सेस भी मार सकते हैं, बट अब पता नहीं यहाँ से कितना स्कोर एक अच्छा स्कोर होगा। 7 गेंदों में कम से कम वो कोशिश करेंगे 14-15 रन तो बनाए ताकि 110 के स्कोर तक वो पहुंच जाए, लेकिन नहीं, यहाँ पर धीमी गति की गेंद शॉपसोल द्वारा आगे आकर उसे सिर्फ खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ। एक और रन ही मिलेगा यहाँ पर 94 7 विकेट के नुकसान पर। अब चलिए हम देखते हैं कि अगर इन्होंने जो भी स्कोर बनाया वो बनाया, क्या वो सदर्न ब्रेव के सामने डिफेंड कर सकती हैं क्या। उनकी बैटिंग लाइन आप देखते हैं तो उसमें से स्मृति मंदाना, डैनी वाइट, ये 2 टॉप के बैटर्स है। क्लो ट्रायन नंबर 3 पर है और बाकी सारे जो हैं वो लगभग इन्हीं के जैसे, नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स जैसे। तो अगर आप ये 3 बैटर को जल्दी आउट कर लेते हैं, स्मृति, वाइट और खास करके स्मृति मंदाना, क्योंकि जो 2 मैच में उन्होंने 2 हाफ सेंचुरी स्कोर किए हैं, तो थोड़ा दबाव आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उनको 10 for 2 जैसे इनका था स्कोर 12 for 2 ऐसे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज अब 95 गेंदों में 95 है स्कोर और इसी के साथ अन्य शॉपसोल का 20 का स्पेल समाप्त हो गया है। 20 गेंदे, 11 डॉट बॉल, 13 रन और 2 विकेट। तो 95 बॉल्स, 95 for 7 और अब वो उम्मीद करेंगे लॉरेन बेल से कि वो 10 रन से ज्यादा ना दे ये सेट में। अगर थोड़े बहुत ज्यादा आ भी गए तो भी 110 इतना बड़ा स्कोर भी नहीं है, पर वो जरूर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लॉरेन बेल जो है यहाँ पर सीमित रखे, खास करके जॉर्जिया वेरन को, क्योंकि जॉर्जिया वेरन थोड़े बहुत फोर्स मार सकती है। पर केट क्रॉस है स्ट्राइक पर 95 7 विकेट के नुकसान पर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स। अभी तक लॉरेन बेल को विकेट मिल गया है, चलो मैं कहने वाला था उनका विकेट आया नहीं है अब तक, और उन्होंने आखिरकार वो विकेट ले लिया और क्रॉस अभी पवेलियन की तरफ वापस जाते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया है यहाँ पे लॉरेन बेल ने उन्हें। और ये एक अच्छा स्टार्ट होगा उनके फाइवर का, उनके सेट का। एक बेहतरीन डिलीवरी डाली है और सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पे 95 रन आ गए हैं, 96 बॉल्स हुई है। तो अभी उनका बेस्ट आउटकम जो लॉरेन बेल का होगा वो रहेगा कि इन्हें मैं कोशिश करूंगी कि 100 से कम पे रखा पाऊं, क्योंकि अगर एक बार वो ट्रिपल डिजिट के नीचे आप रखते हैं तो एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट या बोनस वो आप जब डगआउट की तरफ जाते हैं तब लगता है। खैर अभी स्मिथ आते हुए बैटिंग करने के लिए और लॉरेन बेल, उनका एम तो काफी है, जितने ज्यादा डॉट्स, जितने ज्यादा विकेट्स में यहाँ पे चटका पाओ, क्योंकि खैर बाकी तो विकेट है ही 2। लिंसी स्मिथ यहाँ पे बैटिंग करते हुए आते हुए और अभी उनके पास टास्क है कि जितने ज्यादा मैं रन इन 4 गेंदों से बटोर सकती हूँ वो मेरा एक एम होगा। और वेरहम दूसरी एंड में है और वो उन्होंने अब तक 4 रन तो निकाल चुके हैं। इस बार सीधा मारने की कोशिश, बॉलर के ऊपर से लॉन्ग ऑन की फील्डर जमीमा लॉन्ग ऑन की फील्डर वहां पे आती हुई और एक ही सिंगल मिलेगा। 3 गेंदे बाकी है, 96 है स्कोर। और अभी हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से क्या होता है टोटल, क्योंकि जैसे आपने कहा जो बैटिंग लाइनअप है वहां पे 3 इंपॉर्टेंट बैटर्स, उनके बाद मैच एक सिमिलर सिचुएशन पे जा सकती है। तो अभी नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स का वो एक एम रहेगा कि वो जल्द से जल्द विकेट चटकाए तो वो मैच में वापस आ पाएंगे। इस बार एक शॉर्ट डिलीवरी डालने की कोशिश और कीपर से मिस हो गई वहां पे, इसलिए एक चीकी सिंगल लिया गया है जॉर्जिया वेरहम से। और लिंजी स्मिथ अभी स्ट्राइक पे, 2 गेंदे बाकी, 97 है रन्स। और लॉरेन बेल, उनका एक मैं कहूँगा कि एक बेहतरीन स्पेल रहा है, 12 रन दे चुकी है, 1 विकेट लिया है, तो 11 रन दे चुकी है, ये 12वां होगा रन उनका। वहां पे कोशिश जरूर थी डायरेक्ट हिट करने की और एक रन आउट लेने की, पर वो काफी कंफर्टेबली इन थी वेरहम क्रीज के। और एक सिंगल आते हुए आखिरी गेंद 98। ये जो लास्ट सेट रहा है वो ना बैटर की तरफ से रहा है, मैं कह सकता हूँ कि लॉरेन बेल की तरफ से जरूर था ये, क्योंकि उन्होंने एक विकेट जरूर चटकाया है और रन्स नहीं दिए हैं, जो मैक्सिमम रन्स की जरूरत थी यहाँ पे
ये जो 5 ओवर में जितने बटोर सकते हैं उतने बटोरने की वो नहीं कर पाए। देखते हैं क्या ये 100 का भी मार्क रीच कर पाते हैं कि नहीं, या फिर 98 या 99 पे ही यहाँ पे बेल उन्हें रोक पाएगी। इस बार पुल कर दिया गया है मिड विकेट की तरफ, फील्डर जरूर, और वो डबल एक कपल ऑफ रन्स ले गए, तो 100 तो पहुंच गए यहाँ पे नदन सुपर चार्जर्स। 100 ओवर समाप्त, 8 विकेट उन्होंने गंवाए, और ये एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी मेरी तरफ से सदर्न ब्रेव की। डेफिनेटली, क्योंकि पिछला जो मैच था उनका हेली मैच उसकी टीम के साथ था और उन्होंने 163 रन कंसीड किए थे, तो उस हिसाब से उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि ये अभी भी अपने आप से पूछ रहे होंगे कि जब 5 गेंदों में 8 रन चाहिए था, वहां से मैच हारे कैसे, पर वो उनकी बैटिंग की बात है। बट बॉलिंग में उन्होंने जबरदस्त कमबैक की है, क्योंकि शुरुआत की थी आन्या शपसोल ने, कप्तान, 20 गेंदों में 13 रन और 2 विकेट, और उसके बाद लॉरेन बेल ने 20 गेंदों में 14 रन 1 विकेट। लेकिन बाकी गेंदबाजों ने भी अच्छा सपोर्ट दिया। क्लोड ट्रायन 20 गेंदों में 25 रन 2 विकेट, कालिया मूर 20 गेंदों में 22 रन कोई विकेट नहीं, और जॉर्जिया एडम्स 20 गेंदों में 21 रन और 3 विकेट। और शौर्य, आपके लिए एक मुश्किल काम दे रहा हूं कि इस बैटिंग परफॉर्मेंस में से आप कुछ पॉजिटिव्स निकाल के दे। आई मीन मैरी कैली एक पॉजिटिव थी कि उन्होंने अपना विकेट जल्दी नहीं गंवाया, जहां पे उन्होंने देखा कि जमीमा रॉड्रिगेज और फीबी लिचफील्ड अपना विकेट दे बैठी वहां पे। जमीमा रॉड्रिगेज, खैर वो शपसोल की क्या बेहतरीन डिलीवरी थी, तो वो तो अनप्लेएबल थी, पर उसके बाद भी जहां पे एक एंड पे वो हॉली जो कैप्टन थी उनका भी विकेट देखा उन्होंने जाते हुए, और मैरी कैली जो टिकी रही क्रीज पे, वो 39 रन एक इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर इस टाइम से और इस जगह से वहां पे अगर कुछ एक पॉजिटिव रहेगा तो वही एक इनिंग्स रहेगी। और आर्मिटाज की भी जो 21 रन का नॉक रहा है वो भी एक अच्छा नॉक रहेगा। खैर मैं यहाँ पे कीपर रियाना साउदी की भी तारीफ करूंगा, उनका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन, 4 विकेटों में उनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। और बैटिंग की बात किया जाएगा तो जमीमा रॉड्रिगेज 6 रन पे आउट होते हुए, फीबी लिचफील्ड डक पे गई, उसके बाद एलिस डेविडसन रिचर्ड 5 रन पे, बेस हीथ 11 रन पे, जॉर्जिया वेरहैम 6 रन, और लिया डॉब्सन 1 रन पे आउट होते हुए, और केट क्रॉस 3 रन पे आउट हुए। लिंजी स्मिथ नॉट आउट रही, 2 रन उन्होंने बटोरे अपने टीम के लिए, और 100 रन बोर्ड पे आ चुके हैं नदन ब्रेव्स के। तो क्या वो इसे डिफेंड कर पाएगी? एक काफी टफ चैलेंज है उनकी टीम के लिए, और सदर्न ब्रेव एक लो स्कोरिंग टारगेट मेरी तरफ से, तो क्या वो उसे चेस कर पाए कि नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा मिड इनिंग्स ब्रेक के बाद। You are listening to Flash News, brought to you by Crickcom. Welcome, cricket enthusiasts, to another exciting episode of Flash News, your one-stop destination for the latest updates and stories from the dynamic world of cricket. I'm your host, Isha, and today we have got a lineup that's sure to keep you on the edge of your seats. It's your gateway to the pulse of cricketing events. So, let's jump right in with our first story. Cricket fans, the excitement is building as the ICC Cricket World Cup 2023 draws closer. Officials from the ICC and BCCI recently visited Kolkata's iconic Eden Gardens Stadium to assess its readiness for the mega event. Snesis Ganguly, chief of the Cricket Association of Bengal, revealed that the officials were pleased with the progress. The stadium is all set to host some high-profile clashes during the tournament, and key areas like the new players' dressing room, hospitality and corporate boxes, as well as the press box and media center, have received a thumbs up. But hold your breath, folks. There might be a twist in the tale. Security concerns over the England vs Pakistan match on 12th November due to Kali Puja celebrations have put a question mark on the fixture. We will have to wait and see how this plays out. Now, switching gears to our second story. It seems like there is a little hiccup in the World Cup schedule.
security concerns have cropped up for the Pakistan vs England match scheduled for 12th November in Kolkata. The Kolkata police are raising eyebrows over security arrangements during Kali Puja celebrations. While the Cricket Association of Bengal hasn't received official word, there's a sense of unease. The World Cup scheduling puzzle just got a tad more complicated, adding to the drama of this cricket extravaganza. Moving on, cricket isn't just a sport, it's a global phenomenon. Indian cricket team captain Rohit Sharma is proving just that by launching the Crickingdom Cricket Academy in California, USA. A fantastic initiative to spread the love for cricket beyond borders. It's a remarkable way for the hitman to share his expertise and passion with budding talents on international grounds. It's not just physical prowess that counts in cricket, mental strength is a game changer too. Pakistan Cricket Board is contemplating sending a psychologist with the team to the ICC World Cup 2023 in India. They want to make sure the squad is mentally prepared to handle the high-stakes tournament. An essential move, considering the pressures and challenges that come with playing on foreign soil. Captaincy in cricket is a huge responsibility, and Bangladesh is carefully considering its options. With Tamim Iqbal stepping down due to injury, there is a captaincy vacancy. The spotlight is on Shakib Al Hasan, but there is a catch: his availability. The Bangladesh Cricket Board is taking their time to ensure the best decision for the team's future. Could a rising star be making his debut? Former cricketer Wasim Jafar suggests that Yashasvi Jaiswal might replace Ishan Kishan in the Indian T20I team. Jaiswal's outstanding performances have caught attention, and this could be his moment to shine. It's a decision that could add a fresh twist to India's batting lineup. Now, for some off-field action. Former Pakistan cricketers Mohammad Amir and Kamran Akmal have taken legal action against a cricket bat company, Tajween Sports. They allege deceptive conduct during the Aussie Cricket League. The legal battle highlights the importance of fair practices in the cricketing world. And that's a wrap on this edition of Flash News. But before we sign off, I want to remind you to stay in the loop by logging into the Crickong app for the freshest updates. And hey, don't forget to follow us on our social platforms for more exciting cricket content. Until next time, cricket fans, keep those stumps flying and those boundaries roaring. This is Flash News, brought to you by Crickong.
हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग, नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि ये मुन्ना भाई एमबीबीएस का डायलॉग भी नहीं मार रहा, ना ही मैं यहाँ पर आपसे ये कुछ आपका हाइट पूछ रहा हूँ या फिर कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये जो पारी है कितनी देर चलेगी, क्योंकि चलिए लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दिस। आपको 101 रन चाहिए जीतने को, तो कितना कितना इनफैक्ट वापस ये मैं और शौर्य बहुत कुछ ना जो है ना ऑफलाइन ही बात करते हैं। इनफैक्ट मैं तो बताऊंगा भी नहीं कि हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, वो थोड़ा प्राइवेसी ये होगा, इंट्रूजन होगा। बट नहीं, मैं नहीं बताऊंगा कि हम लोग किधर बात कर रहे थे। बट हाँ वही है कि यहाँ पर 101 चेस करने के लिए आपको मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो नो डिसरिस्पेक्ट इनकी जो बॉलिंग अटैक है नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की, बट वी जस्ट होप कि जो आन्या श्रफसोल ने किया वही केट क्रॉस कर दे, क्योंकि दोनों 1-on-1 दोनों अच्छे सेम टू सेम बॉलर्स हैं। तो अगर के आन्या श्रफसोल भी स्विंग करती है तो केट क्रॉस भी स्विंग करती है, और उन्होंने एक स्लिप भी लगा रखा है। इसी के साथ पहले रन का आगाज होता हुआ यहाँ पर 1 रन यहाँ पर आता हुआ इस पर्टिकुलर रन चेज में, और स्मृति मंधना ने अपना पहला रन बना दिया है इस रन चेज में। केट क्रॉस भी राइट आर्म ओवर द विकेट से, राइट हैंडेड बैटर और डैनी वायर्ड को। अच्छी बात यह है कि अभी भी बॉल स्विंग हो रही है। अगर मेरी गणित सही है तो अभी इंग्लैंड में बज रहे हैं 1:20 तो दोपहर का वक्त है, खाना खाने का वक्त है,
और स्मृति मंदाना ने अभी तक इन 2 मैचेस में जो खेली हैं उसमें 2 अर्धशतक जड़े हैं, तो फॉर्म में है। और आज मैं मानता हूं कि बैटर्स को एक अच्छा मौका है बैटिंग प्रैक्टिस करने का। उन्हें वो क्यों करना चाहिए, क्योंकि और इसी बीच और लीजिए यहाँ पर हाफ लेंथ हाफ वॉली थी, मिडिल स्टंप पर फ्लिक कर दिया डीप मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए। यहाँ पर मैं शौर्य की भी ओपिनियन लेना चाहूंगा। मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं, बट अगर आप 100 गेंदों में 101 चेज कर रहे हैं, आपके पास है लक्ष्य, तो आप कहीं ना कहीं आप समझ जाएंगे कि आप जीतने वाले हैं। अनलेस एंटिल आप 20 for 4 या 20 for 5 हो जाए तो आपके लिए वो चैलेंजिंग टारगेट नहीं। तो आज का दिन वो एक हो सकता है जहां पर अगर मान लीजिए एक विकेट गिर जाता है तो आप बाकी के मिडिल ऑर्डर बैटर्स को टेस्ट कर दें, क्योंकि पता नहीं आगे जाके टूर्नामेंट में आपको ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मान लीजिए आप सेमीफाइनल्स या फाइनल में आए और वहां पर अगर आपकी टीम में स्मृति मंदाना, डैनी वाइट जल्दी आउट हो गई और ये क्लो ट्रायन भी जल्दी आउट हो गए और आपके मिडिल ऑर्डर को जैसे कि आज हुआ इनके साथ, सदर्न ब्रेव के साथ, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में कोई था ही नहीं जो स्टेप अप कर सके। तो ऐसे केस में आज का ये एक ऐसा मैच है जहां पर आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने बैटिंग ऑर्डर के साथ। उन्होंने ओपनिंग कॉम्बिनेशन को तो हाथ नहीं लगाया है, बट पूरे टूर्नामेंट आप सिर्फ 3 बैटर्स के भरोसे तो नहीं चल सकते। वो आपकी ये बात तो मुझे सही लगी है और एक्सपेरिमेंट करने की वो कोशिश जरूर कर सकते हैं, पर ऑन दी अदर हैंड मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा कि यहाँ पे हम जो टूर्नामेंट खेल रहे हैं उसमें नेट रन रेट भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और नेट रन रेट हो गया, फिर हमने देखा है कि बारिश हर जगह पे हो रही है, काफी टीम्स को सिंगल पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, तो पॉइंट्स है जो पॉइंट्स इतने इजीली नहीं आ रहे हैं, और दैट अकाउंट्स टू अ लॉट ऑफ सिमिलर पॉइंट्स। जैसे हम देख सकते हैं नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स और सदर्न ब्रेव्स दोनों के पॉइंट्स इक्वल है, पर इट इज दी नेट रन रेट जो एक डिफरेंस बन रहा है। तो यहाँ पे वॉट और मंदना ट्राई जरूर करेंगे कि जितना जल्दी वो मैच को खत्म कर सकते हैं उतना जल्दी करे, जिससे उनका एक हाई नेट रन रेट रहे और फिर वो एक अच्छी पोजीशन पे रहे। क्योंकि अगर हम वो सेमीफाइनल खेलने की कगार पर ही ना पहुंच पाए, क्योंकि हमने चलो यहाँ पे ट्राई कर दिए हमारे मिडिल ऑर्डर बैटर्स, फिर वो नहीं अगर प्रिपेयर कर पाए या फिर वो नहीं वो परफॉर्मेंस दिखा पाए, तो प्रेशर तो पहले ही आ जाएगा जो इनफॉर्म बैटर्स है, और उसके साथ जो नेट रन रेट की जो इजाफा कर सकते थे, जो एक अच्छा नेट रन रेट बिल्डअप कर सकते थे अपनी टीम के लिए, वो भी नहीं कर पाएंगे। खैर इस बार वॉट ने कट यहाँ पे फ्लिक करने की कोशिश की थी, क्या बैट लगा है? हाँ जी हाँ, वहां पे बैट लगा है और ये रन आते हुए एक्चुअली नहीं लगा है, लेग बाइस दिए है। और खैर जो जहां से भी रन है वो उसे स्वीकार जरूर करेगी यहाँ पे डैनी वॉट। और यही मैं कह रहा था कि अभी मंदना और डैनी वॉट को वो जो हाई लेवल ऑफ स्किल्स है, जो अब जितना जल्दी जितने कम गेंदों में ये गेम खत्म कर पाए उतना करेंगे, क्योंकि क्या पता शायद नेक्स्ट 2 गेम में बारिश हो जाए, फिर आपका पॉइंट टेबल इधर से उधर चला जाए, तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट चीज होगी उनके लिए। वेरी इंटरेस्टिंग, एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि मैं तो ये सोच रहा था, चलिए उसी के बीच मेरी सोच को मारी है गोली और यहाँ पर गेंद को मार दी है गोली डैनी वाइट ने। फुल गेंद काफी बाहर ऑफ स्टंप के बॉलिंजर की, और उन्होंने कार्व कर दिया है पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए। अब 88 रनों की आवश्यकता 92 गेंदों में। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि आपके पास आज मौका है कि आप जो है अपने बैटिंग ऑर्डर को टेस्ट आउट करें। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि मान लीजिए आज आपके पास ये मौका है कि आप मैच जल्दी खत्म कर सके, यानी 101 के टारगेट को आप 50 गेंद 60 गेंद में कर सके। फिर आप वो चेंज बैटिंग ऑर्डर के साथ नहीं कर पाएंगे, फिर आपको शायद 80 गेंदे 90 गेंदे लगेंगे, और हु नोस आगे जाकर बारिश की वजह से या फिर आपने क्लोज मैच आप हारे, पिछला मैच ही वो क्लोज मैच हारे क्योंकि 5 गेंदों में 8 रन चाहिए थे और वो वहां से नहीं जीत पाए। तो अगर ऐसा कुछ हो और 2 टीम्स अगर आपस में आके एकदम एक ही पोजीशन में आ गई, आप बिल्कुल सही कह रहे, तो वो एक रहेगा खींचेगा, बाद में आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैंने तभी वैसा नहीं किया होता तो शायद। तो मे बी इंग्लिश में एक कहावत है, नेवर थिंक टू फार अहेड ऑफ योरसेल्फ, यानी जो प्रेजेंट में हो उसी पर ही ध्यान दे। इसी बीच यहाँ पर एक विकेट का मौका और जस्ट ओवर मिड ऑन, फुल गेंद काफी अच्छी थी बॉलिंजर की, फुल लेंथ की गेंद थी, स्विंग हुई अंदर, डैनी वॉट ने उसे ऊपर उठाने की कोशिश की और उठाया जरूर, और जस्ट ये तो केट क्रॉस नजर आ रही है, वो फील्डर वही थी क्या मुझे पता नहीं, मिड ऑन पर उन्होंने छलांग जरूर लगाई और गेंद उनके ऊपर से चली गई। इसी के साथ ओवर जो है समाप्त हो गया है। 10 गेंदों के बाद 17 बिना किसी विकेट के नुकसान के यहाँ पर सदर्न ब्रेव।
Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. We value your feedback and encourage you to share your thoughts through our chat box. Get ready to elevate. मैं अभी शौर्या से बात करने वाला था कि मैं अपना चश्मे का नंबर जो है जाके चेक करता हूँ, क्योंकि मैं उनसे कह रहा था कि मुझे तो लग रहा है जेमाइमा रॉड्रिग्स बॉलिंग कर रही है और एक्चुअली जेमाइमा रॉड्रिग्स ही बॉलिंग कर रही है। ये कब हुआ? क्योंकि नॉर्मली जेमाइमा रॉड्रिग्स वैसे बॉलिंग करती नहीं है, पार्ट टाइम बॉलर है, पर इज इट बिकॉज ऑफ द इंडियन इफेक्ट? इंडियन बैटर है तो इंडियन बॉलर को लाए, पर ये तो मुझे कुछ सेंस नहीं बनता। शायद मुझे लग रहा है कि सदर्न ब्रेव्स की जगह पे नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स ने आपकी बात सुनी है कि अभी वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। अभी उनके पास चलो खैर हम शायद ये मैच मेंटली तो इतने कंफर्टेबल नहीं है यहाँ पे, तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, शायद यहाँ पे रॉड्रिगेज एक अच्छा स्पेल डाल पाए। मुझे एक इंस्टेंस याद आ रहा है, आई गेस 2009 के आईपीएल में, जहाँ पे डेक्कन चार्जर्स की टीम थी और उन्होंने रोहित शर्मा को आउट ऑफ द ऑर्डिनरी एक चांस दिया था और उन्होंने एक हैट्रिक लेके मैच को फिर डेक्कन चार्जर्स की तरफ ला दिया था। वो बॉलिंग डालने के लिए तब भी नहीं इतने जाने जाते थे, पर खैर उन्हें तब ऑलराउंडर कहा जाता था। पर मुझे लगता है कुछ वैसा ही एक चांस यहाँ पे लेने की कोशिश की। लेकिन उसमें और जेमाइमा में एक फर्क है। रोहित डोमेस्टिक में डालते थे तो उन्हें ऑलराउंडर माना जाता था, जेमाइमा तो ऑलराउंडर मानी ही नहीं जाती। तो यहाँ पे मुझे तीन चीजें नजर आ रही हैं कि क्या सोच रही है इनकी कैप्टन हॉली आर्मिटाज। एक, इंडियन वर्सेस इंडियन ऑफ स्मृति मंधना वर्सेस जेमाइमा रॉड्रिग्स। दूसरी बात, ये जो विमेन्स प्रीमियर लीग खत्म हुआ था मार्च में, उसमें स्मृति मंधना 7 में से 6 या 5 बार ऑफ स्पिन के अगेंस्ट आउट हुई, तो वो एक हो सकता है। तीसरी बात, नॉर्मली जेमाइमा को आप देखेंगे तो आपको लगेगा पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है, मैं इनको अटैक कर सकता हूँ, इसी बीच शायद आप अपना विकेट गंवा बैठ सकते हैं। पर अब हो ये रहा है कि यहाँ पर तो मतलब एक खुला यहाँ पर एक इनविटेशन मिल रहा है दोनों बल्लेबाजों को कि यहाँ पर, और एक मिसफील्ड भी होते हुए, और क्लियरली यहाँ पर नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स बिल्कुल भी इस मैच में फोकस्ड नहीं है। बिकॉज जैसे कि वेरी पुअर मिसफील्ड, आई मीन कोई अच्छी मिसफील्ड नहीं होती बट वेरी पुअर फील्डिंग में कहूंगा। यहाँ पर डैनी वाइट ने से पंच कर दिया सीधा बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और गेंद उनके दोनों पैरों के बीच में से निकल गई 26 बिना किसी विकेट के नुकसान के। भी छोटी गेंद और से पुल कर दिया है, एक और चौका लेग साइड पर यहाँ पर डीप मिड विकेट की तरफ। और जेमाइमा रॉड्रिग्स को जिस मोटिव से लाया गया था वो बिल्कुल ही पूरा नहीं होता हुआ, क्योंकि 5 गेंदों में 9 रन यहाँ पर दे दिए हैं जेमाइमा रॉड्रिग्स ने, और इसी के साथ स्कोर पहुंच गया है 15 गेंदों के बाद 26 बिना किसी विकेट के नुकसान के। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स बिल्कुल भी, आप मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये बात की बात है, लेकिन कम से कम आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। अगर आप पहले से ही मैच में हार मान जाओगे तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है ये मैच खेलने का। तो ये जो भी थॉट थी हॉली आर्मिटेज की, कुछ भी यहाँ पर नहीं चलता हुआ। और विन प्रेडिक्टर भी देखिए, फिलहाल विन प्रेडिक्टर कह रहा है 84% सदर्न ब्रेव ही जीतेगी। एंड लॉजिकल है, क्योंकि आपको 75 रन चाहिए 85 गेंदों में, तो अनलेस एक कोलैप्स यहाँ पे कुछ हो, वहां पे कुछ होने वाला है नहीं। बट अगर मैं हॉली आर्मिटेज की जगह पे होता तो मैं कहता था अपने बेस्ट बॉलर्स को यहाँ पे लाऊं और कोशिश करूं कि हम ये मैच जीते। अगर नहीं भी जीत पाए तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप 6 या 7 विकेट लेते हैं तो एक मॉरल विक्ट्री आपको, जो ये देखे सही जबरदस्त गेंद थी, लेंथ पे पिच हुई और बाहर की तरफ गई और डैनी वाइट बीट हुई, कीपर ने फंबल किया, लेकिन वहां पर शायद कोई आउटसाइड एज नहीं था। आपकी क्या प्रतिक्रिया, मतलब अगर आप ये मतलब ये थॉट प्रोसेस एक्सेप्ट करते हैं कि एक पार्ट टाइमर को ये बीच में गेंद दिया जाए? क्योंकि वो होता है, कभी कभी होता है कि एक पार्ट टाइमर आपका विकेट लेता है, लेकिन हर दिन तो रोहित शर्मा आपको हैट्रिक निकाल के नहीं देगा। वो तो एकदम बराबर बात कही। और जब आपका सेट ही आप तीसरे या चौथे सेट पे है तब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आपको दिख रहा है कि सिचुएशन आपकी तरफ नहीं जा रही, आपके पास काफी बॉलर्स है आपके टीम में, जैसे केट क्रॉस भी हो गई, और जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तब जैसे एग्जैक्टली जो आप कह रहे थे कि डाली अपने बेस्ट बॉलर को डालने दीजिए, अगर 1-2 विकेट चटका दी जाती है तो थोड़ा प्रेशर तो बनेगा सदर्न ब्रेव्स पे। अगर अभी तो आप पार्ट टाइमर को ही ला देते हैं तीसरे सेट में,
और फिर वो काफी रन के लिए चले जाते हैं। तो ऐसी अगर स्थिति आ गई तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर देखें तो अगर पहली इनिंग्स इतनी अच्छी जा सकती है बॉलिंग के लिए, तो आपकी भी तो जा सकती है ना। अगर आपके पास उतने बॉलर्स है, उतनी कैपेबिलिटीज है, तो क्यों नहीं। तो आई मीन यहाँ पे मैं कैप्टनसी की थोड़ी निंदा करूंगा कि उन्हें एक अपने जो टॉप बॉलर्स है उन्हें ही कंटिन्यू करना चाहिए था, और वो जो रन का दबाव है वो तो बनता, वो प्रेशर तो एटलीस्ट बन पाता, पर यहाँ पे अभी प्रेशर बिल्कुल नहीं है, और प्रेशर बॉलर्स पे ही है अभी। सदर्न ब्रेव यहाँ पे डॉट्स अफोर्ड कर सकती है काफी अच्छे से। और ये आखिरी गेंद उनके सेट की होगी, क्रॉस के सेट की, ये थोड़ा बेहतर सेट था, ज्यादा रन आए नहीं है, पर मैंने जैसे कहा जहाँ पे डॉट वॉट और मंदाना डॉट यहाँ पे अफोर्ड कर पाएंगे। 26 रन है, 75 रन की रिक्वायरमेंट है उन्हें, 80 बॉल्स हो चुके हैं और विकेट्स तो उन्होंने अब तक गंवाए नहीं। Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. We value your feedback and encourage you to share your thoughts through our chat box. Get ready to elevate your fantasy team selection and take your gaming to the next level. Only on the Crick Kong app. हाय, मेरा नाम है बाबा शीश नंदा। आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिक कॉन्ग ऐप। क्रिक कॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स है, लगातार डॉट बॉल हो गए यहाँ पर, और ये थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग है, ये अच्छा है देखने को। और यहाँ पर लगातार डॉट बॉल्स पे डॉट बॉल्स आते हुए 26 बिना किसी विकेट के नुकसान के, और ले लीजिए इसे कहते हैं नजर लग गई और हल्की सी मिसफील्ड भी वहां पर स्मिथ के द्वारा, लॉरेंस स्मिथ द्वारा। छोटी गेंद थी मिडिल एंड लेग स्टंप पर केट क्रॉस द्वारा, और स्मृति मंधना ने उसे पुल कर दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, और लॉरेंस स्मिथ पहुंची वहां पर, डाइव भी लगाई लेकिन गेंद को रोक नहीं पाई। तो यहाँ पर 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के 22 गेंदों के बाद, और 71 रनों की आवश्यकता 78 गेंदों में। तो पिछले मैच में एक जबरदस्त शानदार ओपनिंग साझेदारी थी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। आज भी ये दोनों बल्लेबाज सही लय में नजर आ रहे हैं, सही ढंग पे नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं MS धोनी की फिलॉसफी को लेके आऊंगा। MS धोनी हमेशा कहते थे कि अगर आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं ना, फिर आप रन रेट पे फोकस मत करो, आप सिर्फ मैच जीतने पे फोकस करो और एक्सपेरिमेंट मत करो। क्योंकि आप चेन्नई की भी बैटिंग देखेंगे इंडियन T20 लीग में, वेरी रेयरली आप कुछ ऊपर नीचे देखेंगे। एक ज्यादा से ज्यादा एक फ्लोटर होगा, शिवम दुबे या मोइन अली, उसके अलावा कोई ऐसा फ्लोटर होता ही नहीं था। हर प्लेयर जो है वो एक ही फिक्स पोजीशन पे बैटिंग करता था, क्योंकि उनका मानना था कि जैसा अपना रोस्टर होता है, और जैसे कि हमें ये जानना जरूरी होता है कि हम कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, हमारी छुट्टी कब है, तो हम अपना हफ्ता जो है ऐसा प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से एक प्लेयर को भी समझना होता है कि वो कहाँ बैटिंग करने वाला है, टॉप 5 में, नंबर 3 पे, नंबर 2 पे, नंबर 4 पे। हाँ, मैक्स टू मैक्स आप 1-2 प्लेयर को आप बोल सकते हो आप किधर भी बैटिंग करो, अगर मान लो ओवर्स कम है, आपको हिटर्स चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये भी कभी कभी साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है। फिलहाल चलिए आखिरी गेंद इस पर्टिकुलर सेट का, 5वें सेट का फाइनल गेंद, छोटी गेंद पंच कर दिया है और ये आउट। पहला विकेट यहाँ पर गिरता हुआ, लेकिन क्या ये नो बॉल है ये देखा जाएगा, क्योंकि गेंद तो सीधा खेल दिया है पॉइंट की तरफ। ये देखना होगा कि क्या ये नो बॉल है कि नहीं, क्योंकि 31 पर पहुंच गई है टीम, और यहां पर अभी भी देख रहे हैं कि क्या ये नो बॉल है कि नहीं। शॉर्ट गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, उसे कट कर दिया सीधा पॉइंट की तरफ, और इसी के साथ यहां पर पहले विकेट का पतन होता हुआ यहां पर, और लॉरेंस स्मिथ ने वो कैच, लिंसी स्मिथ वो कैच पकड़ती हुई, और इसी के साथ पहला विकेट गिरता हुआ। डैनी वाइट 20 रन के स्कोर पर आउट होती हुई। तो 25 गेंदों के बाद यहां पर 31, एक विकेट के नुकसान पर सदर्न ब्रेव, और नए बल्लेबाज है माइया बाउशर।
Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. We value your feedback and encourage you to share your thoughts through our chat box. और अभी थोड़ा प्रेशर नहीं बोलूंगा मैं, काफी एकदम 1% या 2% प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि एक विकेट जरूर जा चुका है और डैनी वॉट ही थी जिन्होंने मैक्सिमम रन बनाए यहाँ पे, क्योंकि 20 रन बनाए उन्होंने 18 गेंदों में। और अभी स्मृति मंदाना पे एक टास्क रहेगा कि वो इस पार्टनरशिप को एंकर करे माइया बाउशर के साथ, क्योंकि अभी जैसे मैंने पहले कहा था, आपके पास एक ऐसा गोल्डन चांस है आपका नेट रन रेट एक बेहतरीन बाउंस देने का, क्योंकि एक बार आपको वो नेट रन रेट पे बाउंस आए तो आप मैच को विद द गेम्स देख सकते हैं। जैसे आपने कहा, जो MS धोनी का आइडियोलॉजी है कि हम वो 2 पॉइंट्स पे कैप्चर कर सकते हैं। और इतना अनप्रेडिक्टेबल है ये टूर्नामेंट विद द गेम्स, क्योंकि आपको पता नहीं चलता, आप जाते हो एंड वेदर वही मोस्टली बिकॉज ऑफ द वेदर, क्योंकि आप कोई ग्राउंड में जाते हो, सोचते हो चलो हम आज गेम खेलेंगे, एक जीतने की कोशिश करेंगे, और फिर रेन गॉड्स कहते थे भैया नहीं, आपको आज हम खिलाएंगे नहीं, आपका रेस्ट डे है। जैसा हमने काफी बार देखा है। हमने एक बात शायद ये भी ऑफ माइक की थी कि आउट ऑफ 7 गेम्स देयर हैव बीन 4 गेम्स जो वॉश्ड आउट हो चुके हैं, विच इज समथिंग इन अ टूर्नामेंट दैट कैन इफेक्ट द पॉइंट्स टेबल काफी ज्यादा। और यही एक इफेक्शन से बचने के लिए, अपने आप को एक सेफर साइड में रखने के लिए सदर्न ब्रेव और ये जो बैटर्स अभी आए हैं मंदाना और बाउचर, उन्हें कोशिश करनी पड़ेगी कि जितना जल्दी एज फास्ट एज पॉसिबल वो अपना गेम खत्म करने की कोशिश करेंगे। पर ऑन द अदर नोट ऑल्सो, आप अपने विकेट्स हाथ में नहीं दे सकते, वो रिस्क टेकिंग शॉट्स नहीं खेल सकते, तो आपको एक बैलेंस यहाँ पे जरूर बनाना पड़ेगा। उसी के साथ एक मैं कहूँगा कि एक बेटर ओवर यहाँ पे स्मिथ का, एक अच्छा कैच पकड़ा उन्होंने, फिर अभी अच्छी गेंदबाजी, 2 रन, केवल 2 रन दिए हैं अपने इस सेट में, और रन आ चुके हैं अभी बोर्ड पे 33, 68 रन रिक्वायर्ड है, 1 विकेट जा चुका है और 70 गेंदे बाकी है। Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. We value your feedback and encourage you to share your thoughts through our chat box. Get ready to elevate your fantasy team selection and take your gaming to the next level. Only on the Crick Kong app. Right, the men have come here. That's the, as we know, the tradition of the 100, that on a particular day when there's a double header, the 2 teams which play on that day at a particular ground are first represented by the women and then are represented by the men. So first, this is the women's game now, Northern Superchargers versus Southern Brave, and then the same 2 teams, Northern Superchargers or Southern Brave, will be represented by the men. And now the player with a big round smile across her face, always that is Alice Davidson Richards, comes on to bowl, and you never feel like, even, I mean, you should never hate anyone in life, of course, but you never even feel like hating this kind of a player, because the moment you see her, whether she commits a mistake, whether she takes a wicket, she's always smiling, and that's a very, very good quality to have, because to smile when you're under pressure will shows that you're enjoying the game and you're not too bothered about what's happening on the outside world. First ball, now she's gone for a boundary, and second ball she's bounced back with a wicket. Alice Davidson Richards. Yeah, I always get confused with her name because I always call her Alison David Richards. So I'll call her name. Yes, her name is Alice Davidson Richards. 3 balls. She has gone for 5 runs so far.
Yeah, and your smiling example reminded me of Three Idiots, that scene there when the teacher asks Amir Khan, "Why are you smiling?" He says, "I'm just enjoying the lecture." I think that is the reason why Richard's smile is there. She's enjoying her bowling, regardless of the team going for a victory or not. She There you go. enjoys her balls there, and she is smiling. She is happy that she has bowled a good delivery. She is happy if she has gone for a boundary as well. That is a great attitude to have in someone. Yes, and you always feel proud that you are representing some team. May not be necessarily the country, but you're representing a team. You're getting a chance to play, and it's something which many people don't. So whenever you get a chance, just make sure that you get that chance. You make use of that chance rather than cribbing over everything. And on that note, I would like to just remind all our listeners what happened yesterday. We were covering, me and Dipesh were covering the Lanka Premier League game, and it was a very, very, I'm sorry to use these kind of words, but it was a very horrible experience because first there was something which happened. One of the batters wanted to change the bat, and Hassan Ali was the bowler. He was not happy with what he was doing, and he is actually telling the umpire that you should be telling him to do. I'm sorry, but Hassan Ali has got no right to tell the umpire what he should be doing. I'm sure the umpire have passed certain exams and they've come over there, so we need not tell them our jobs. It's like we tell our bosses their job, so it's not our job. And then after that, well, one of the batters, Chamika Karunaratne, just got out of harm of a throw from one of the players, and Kusal Mendes started to just give hurl abuses at him. You don't want to see this. And at the end of the day, you have young kids watching, you have people watching. You want to be a role model, and that's where players like Alice Davidson Richards can be a very, very good role model. That irrespective of where your team is in, what situation your team is in. Yes, people can question you. What's the point that your team is losing? You're still smiling. I say, I'm not smiling on the situation. I'm just smiling on the fact that I am getting to play in a game. I got a chance to play day before yesterday also, and I'm getting a chance to play today also. So that is how I would say, because I don't know whether I'll get a chance to play tomorrow or day after, whenever is the next match. Meanwhile, change in the bowling. It's Lindsay Smith now who's coming back for her next set of balls, her set of 10 now. 7 balls, 4 runs so far, make that 8 balls, 5. And the score is 42 for the loss of a wicket. 59 more needed from 62 balls. Pretty much comfortable are the Southern Brave, but the Northern Superchargers will be looking to make a psychological dent everywhere. Normally we ask, what is the point if you're losing the game? Well, it matters. It definitely matters, because the tournament has not ended here. You are playing a next match. Who knows, you could learn something from this defeat, and or take something from this game into your next match, and you could give a good performance over there. Well, effort never goes wasted. Yes, sometimes it does happen that you put an effort with some point in mind. That doesn't happen, but it reflects somewhere else. And with that, the next set is done. 40 balls have gone by. Well, Southern Brave are not actually ruling the roost, but they are pretty much comfortable. 58 needed from 60 balls. Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat, as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. We value your feedback and encourage you to share your thoughts through our chat box. Get ready to elevate your fantasy team selection and take your gaming to the next level. Only on the Crick Kong. 58 runs required of 59 balls. It's less than a run a ball. The target is of 101. The score on the board is 43, and there has been, I would say, a change in pace of batting by Mandira and Mia Bausha, because we saw the wicket of Danny Ward. She was the one who had the most acceleration done, 20 runs, and in which she hit five boundaries there. So it is Smriti Mandhana who is taking her time, but this time she says that I am going to prove Shaurya wrong. He hits a boundary there, and 15 runs on her scoreboard. They are playing a comfortable game there, and they don't need to take those risks. This time she just cuts the ball and towards the deep
third man. No fielder out there, shot third, trying her level best to stop that boundary. But nevertheless, a good and well timed shot by Smriti Mandhana, and she is in astute form here. She is having, I would say, a form of 100 life, because in the earlier game, which was even lost by the team, she had put forth a brilliant performance, 17 not out. That's a great thing. And against the Rockets, the earlier match was against the Fires, Welsh Fires. She played a great knock. Yes, they were in the defeating side, but that would give her some confidence. And in the earlier game against the Rockets, she scored 55 runs. So she is in an astute form right now, and she would be wanting to continue that so well. And on the other end, Bowser has a chance to prove herself and get those big runs and get those big totals chased. Though this is not a big total to be chased, but nevertheless, she has the capability to do that. So, and now it would be just a single 52 runs required, and that will be the end of the set of Wareham. 5 balls and 6 runs she has given. So at this point, the win predictor says that 88% the match is with the Southern Brave. So what do you think of this, Karthik? We see technology used here to prove, and numbers, and a lot of permutation and combination, and AI also. I'm not just throwing in that term here, but at this point it is AI which is used to calculate the percentage. So what do you think of uses of AI in cricket as per? Yeah, it's nice as long as the user is able to understand what's happening. Well, it's really nice, but it's not always logical. For example, there was this case. It was during the 4th Ashes Test or the 5th Ashes Test. I don't know. Australia were lagging behind by 100 or 150 odd runs, and apparently they had a 35% chance of winning, and draw was 1%, and England had 63%, 64% chance of winning. And I was thinking, on what basis was that calculated? So it's primarily because they looked at the number of overs remaining. There are 2 days left, so they thought Australia would cover up that those many runs, and then they gave England to bat, etc., etc. But they didn't account for the weather which was coming in during that 4th test. So in that case, sometimes we do fall short where there is lack of logic being used. But anyways, nice to see Chris Jordan out of the middle, because Chris Jordan missed out the previous match. Would you actually believe this? He was playing in a match where his team were 74 for 8. He came out to bat and scored a blistering 70 unbeaten, and then did not bowl because he was injured while batting. So a bowler who is actually injured doing something which is not used to doing, and he missed the next match as well. But today he's out there signing autograph. So and he represents the Southern Brave, and he might be featuring in this game, in the game which is coming up next. That's going to start at 7 p.m. IST. So he would look to be in good shape. Meanwhile, it's another boundary now for Maya Bowser. Comes down the track and pulls this wide of mid-on. Well, the Southern Brave are comfortably placed, but they're not actually trying anything out of the ordinary. 47 runs needed, 52 balls, and they're not going like a runaway train either. Because in 48 balls they have scored just 54 runs. So they are also playing the same way which the Northern Superchargers played, just that they have got plenty of wickets in hand as compared to what the Northern Superchargers had. Because by this point, they had already lost 2 wickets. Oh, short ball! It just had needed some statement, I think, to get that triggered. And Maya Bowser has decided to step on the gas. Short ball outside the off stump, and Bowser has pulled that over mid-wicket. 1 bounce and into the ropes. And Alice Davidson Richards is not enjoying a great day so far. Well, she had a wonderful day in the previous game, but today she is kind of struggling. And also the target also is not quite helping her. She doesn't have a cushion behind her to experiment a few things, if we might add. And now the final delivery of this set, 58 for 1, 43 needed from 51 balls. Davidson Richards has gone for 15 in the 9 balls that she has bowled, and now the sweeper cover coming in, and mid-wicket drops back for Alice Davidson Richards. And final delivery, short ball again pulled away. There is a fielder, but she can't get there, and doesn't matter because the ball deep square leg. What an expensive set this is for Alice Davidson Richards. She finishes the second set, 10 balls bowled, 21 runs conceded, and well, the score moves on to 64 for the loss of a wicket. Just 37 more needed now from 50 balls. Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features.
Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. We value your feedback and encourage you to share your thoughts through our chat box. Get ready to elevate your fantasy team selection and take your gaming to the next level. Only on the Crick Kong app. हाय, मेरा नाम है बाबाशीष नंदा और आप हमें सुन सकते हैं द क्रिकेट बाबा शो में ऑन द क्रिक कॉन्ग ऐप। क्रिक कॉन्ग ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो द क्रिकेट बाबा शो में आपको सारा सब कुछ क्रिकेट के रिलेटेड मिल जाएगा। एनालिसिस तो मिलेगी, फैंटेसी पिक्स भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, डाउनलोड कीजिए द क्रिक कॉन्ग ऐप और सुनते रहिए। Calling all cricket fanatics. Get ready for the ultimate cricket experience with the Crickong app. Stay in the know with daily match updates and unlock the secrets to victory by connecting with cricket prediction gurus. Stay ahead of the game, make winning fantasy cricket decisions, and join us for more thrills. Only on the Crickong app. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. We value your feedback and encourage you to share your thoughts through our chat option. Only on the Crickong app. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आयुष रूंगटा और आप सुन रहे हैं मेरा शो स्टैट्स अनप्लग्ड। क्रिकॉन्ग के इस बेहतरीन ऐप पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ जुड़े और आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। जी हाँ, now a blistering batting, I would say, by Bowser. She has, she has taken your words quite seriously here. And the great set for them. 2 4s and 1 6. I mean, we have not seen quite a lot of sixes here, and we have not seen quite a lot of that. As cross bowls bouncer, it has been given a no ball, and the keeper misses it because the keeper was standing short, and the ball goes behind her for a boundary. So it would be 5 runs on that over, and the ball has to be bowled again. So free runs here for the Southern Brave and Smriti Mandhana. Now she's quite comfortably playing here. She's not doing a lot of things, and yes, that would be 2 runs added. So that will be a 6 runs on that earlier delivery. This time she just places it and takes a comfortable single. Says Maya Bowser gives Maya Bowser the strike. She is doing a great job of hitting the ball left, right, and center. So 30 runs are required. They would be wanting now to take that strike rate a bit ahead. So I mean, the net run rate, I have been constantly talking. They can work upon that, and Maya Bowser is, I think, working on that itself. 2 balls remaining of the of the set of cross, and this time it has been placed towards the covers region. A fielder would be there. It would be a single there. I mean, the ball. No, it would be a couple of runs. No, sorry, mind you, it would. I apologize. It would be a single. And Smriti Mandhana now on strike. Smriti Mandhana is not having that innings. I mean, which we saw against the Welsh Fire. She was quite blasting there, but this time she doesn't need to play that quickly, as the match is quite so in their hand. They take a single here, and singles and doubles are only required at this point of time. They wouldn't be wanting to put additional pressure on the other batters. They wouldn't be wanting to put not required pressure here. Last ball of the cross is set, and she has been, I would say that she has been economical and one of the best bowlers for the Northern Strikers. 1 wicket, the only wicket she has taken, and a bit economical here. Last ball of her set spell, and that would be ending with a single. That is now 27 runs required here of 45 deliveries, and the score on the board is 74,
with the loss of 1 wicket. Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captain. तो अब 44 गेंदों में चाहिए 26 रन और या एक आसान सी जीत यहाँ पर नजर आती हुई सदर्न ब्रेव की। हालांकि कुछ भी हो सकता है, ये हमने सदर्न ब्रेव के ही प्रीवियस मैच में हमने देखा था, क्योंकि वो आराम से चेस कर रही थी 163 के इस लक्ष्य को, उस लक्ष्य को, लेकिन अंत में वो कहते हैं ना हाराखीरी हो गई और इवेंचुअली विकेट्स गिरते गए। तो एक क्रिकेट मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक वो एक्चुअली खत्म नहीं होता, और इंग्लिश में कहावत है टिल द फैट लेडी हैज सung वैसे। तो लेकिन हम ये समय लेना चाहेंगे। ओह, अब ये गेंद हवे में है, क्या ये विकेट है? जी हाँ, बिल्कुल, बढ़िया कैच जॉर्जिया वेरन द्वारा। फ्लाइटेड गेंद थी लिंजी स्मिथ द्वारा ऑफ स्टंप के बाहर। स्मृति मंदना आगे आई और इसे स्लॉक स्वीप करने का प्रयास कर बैठी, पर प्रयास काफी नहीं था क्योंकि शॉट में ताकत नहीं थी, दूरी नहीं थी, और वो गेंद गई डीप मिड विकेट की तरफ। और जॉर्जिया वेरन जो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स हैं इस टीम की नहीं पर इस विश्व की महिला क्रिकेट में, वो ये सब कैचेस यूजुअली नहीं छोड़ती। और ये काफी ग्राउंड उन्होंने कवर किया, काफी ग्राउंड। और सबसे बढ़िया बात तो ये कि जब उन्होंने देखा कि कैच उनकी तरफ आ रहा है, वो जिस तेजी से दौड़ी गेंद की तरफ, ये दर्शाता है कि कितनी अच्छी खिलाड़ी है वो, कितनी अच्छी फील्डर है वो। स्मृति मंदना एक मैं कहूंगा इतनी अच्छी पारी में नहीं थी, कभी सेट ही नहीं लग रही थी। 19 रनों का सामना किया, 21 गेंदों का सामना किया, पर जैसे कि शौर्य ने एकदम सही तरीके से उसको डिस्क्राइब कर दिया, उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। क्योंकि पहले जब वो डैनी वाइट के साथ बैटिंग कर रही थी तो डैनी वाइट सारे अटैकिंग शॉट्स खेल रही थी, फिर तो उन्होंने सोचा कि मैं वाइट को स्ट्राइक देती हूँ। फिर जब माया बाउशर आई तो माया बाउशर ज्यादा रन स्कोर करने लगी। तो वो जो कहते हैं ना, ये एक पैसेंजर बन के रहेगी कि मेरा काम है सिर्फ एक रन देना। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है अपना खुद का अस्तित्व भूल जाते हो, आप सिर्फ यही सोचते हो कि मेरा टीम मेंबर या मेरी टीम मेंबर अच्छा खेल रही है, मैं उसको स्ट्राइक दूं, जो गलत बात नहीं है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो आपके अगेंस्ट चला जाता है। पर फिलहाल इस मैच में वो उतना फर्क नहीं गिरना चाहिए, 77 2 विकेट के नुकसान पर। तो हाँ, तो शौर्य ने एक पॉइंट टच किया था कि नो बॉल जो पिछले ओवर में डाली गई थी उस पर 2 रन मिलते हैं। तो हम ये मौका लेना चाहेंगे कि आपको ये बताने के लिए कि 100 में क्या क्या रूल्स है, कैसे रूल्स हैं। तो सबसे पहले तो 100 में ओवर नहीं होता है, एक सेट होता है। और क्रिकेट में कैसा होता है कि एक ओवर 6 गेंदों का होता है, यहाँ पर एक सेट जो है 5 गेंदों का होता है। क्रिकेट में वैसे तो 2 एंड्स होते हैं, एक एंड से 6 बॉल डाली जाती है, दूसरे एंड से 6 बॉल डाली जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक एंड से आप 10 बॉल डाल सकते हैं, यानी 2 सेट डाल सकते हैं। उसके बाद आप जो है आप एंड चेंज कर सकते हैं, वहां से 10 बॉल डाल सकते हैं। क्रिकेट में एक बॉलर एक टाइम पर एक ही ओवर डाल सकता है, वो बैक टू बैक ओवर्स नहीं डाल सकता। और लेकिन यहाँ पर एक बॉलर को अलाउड है कि वो एट द मोस्ट 10 कंसेक्यूटिव बॉल्स डाल सकता है, यानी 2 सेट एक साथ डाल सकता है वो। और उसके बाद यहाँ पर वाइड का अतिरिक्त का 1 रन होता है, नो बॉल का अतिरिक्त 2 रन होता है, और हर बॉलर मैक्स टू मैक्स 20 गेंदे डाल सकता है या डाल सकती है। और ये 100 के रूल्स हैं। फिलहाल 40 बॉल समाप्त, माफ कीजिएगा 60 बॉल समाप्त, 78 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर सदर्न ब्रेव 23 रनों की आवश्यकता 40 गेंदों में। हाँ, और अभी एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि बाउशर को ये मैच एंड करने की उनकी चाह रहेगी, क्योंकि 23 रन की आवश्यकता है और मैच मोर देन कंफर्टेबली उनके हाथ में जा चुका है। लेस देन 3/4 में होगा, कर्टन्स डाउन हो चुके हैं। और जी हाँ, इस बार एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ मार दिया है उन्होंने एक चौका, और बाउशर एक अच्छे फॉर्म में दिखते हुए, एक अच्छी बैटिंग करते हुए। मैंने कहा था कि मोस्टली स्मृति मंदाना और डैनी वॉट वो बैटर्स रहे हैं जो इस टीम्स के लिए मैक्सिमम रन स्कोर करे, और ये एक अच्छा मौका है बाउशर को अपनी टीम को दिखाने के लिए कि जी हाँ, मैं भी यहाँ पे बैटिंग कर रही हूँ और मैं एक अच्छी केपेबल बैटर हूँ सदर्न ब्रेव के लिए। तो उन्हें एक अच्छा ऑप्शन की तरह देखने की कोशिश, और इस बार सीधे मारने की कोशिश सीधा बॉलर के हाथ में, जॉर्जिया वेरहम के हाथ में दे दी है। और अभी जैसे मैंने कहा कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत उन्हें नहीं है, बस
आराम से खेलेगी वो, और ऐसे ही बाउंड्रीज निकालने की कोशिश, गैप निकालने की कोशिश करे कि इस बार कवर्स की तरफ मारने की कोशिश की थी, फील्डर थे तो एक सिंगल ले लिया है। 18 रनों की जरूरत है 36 बॉल्स में। तो मैच तो काफी हद तक मतलब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बोलूंगा कि नहीं, एक होप भी है यहाँ पे नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के लिए, पर देखना पड़ेगा कि इट इज अबाउट व्हेन, जैसे हाउ लॉन्ग आप कह रहे थे स्टार्टिंग में, इट इज अबाउट व्हेन दिस मैच विल गेट एंड, क्योंकि अभी एडम्स और बाउशर पे डिपेंड करता है वो कि वो कितना तेज इस गेम को खत्म करना चाहेगी। खैर यहाँ पे एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखने मिली है हमें उन दोनों के बीच में। 35 बॉल्स बाकी है और 16 रनों की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे 2 विकेट जा चुके हैं सदर्न ब्रेव के। Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. और जैसे कि हम कह रहे थे कि एक बॉलर कंटिन्यूअस 10 गेंदें डाल सकता है, डाल सकती है, जॉर्जिया वेरम वही कर रही है और ये बैक टू बैक वो 5 बॉल यहाँ पर डाल रही हैं और यहाँ पे स्लॉक कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। वहां पर खिलाड़ी मौजूद हो, यहाँ पर विकेट गिरता हुआ, विकेट नंबर 3 और यहाँ पर खिलाड़ी है लिंजी स्मिथ। तो लिंजी स्मिथ वो पहली खिलाड़ी थी जिन्होंने पहला विकेट लिया, वो पहला कैच लिया, माफ कीजिएगा, और तीसरा कैच भी उन्होंने ही लिया है। फुलर गेंद थी, लेग स्पिनर थी जॉर्जिया वेरन द्वारा और सीधा कैच थमा बैठी यहाँ पर जॉर्जिया एडम्स स्लॉक स्वीप करने के प्रयास में। और सिर्फ जो आने वाली बल्लेबाज है फ्रेया केम्प, उनको उन्होंने कहा कि बॉल थोड़ी सी स्किड ऑन हो रही है, पर ठीक है, 33 गेंदों में आपको 16 रनों की आवश्यकता है, इतनी भी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। पर हाँ, थोड़ी बहुत यहाँ पर कप्तान सोच रही होगी सदर्न ब्रेव की, अन्या शब्सोल की, कि मिडिल ऑर्डर थोड़ी स्टेबल हो जाए, क्योंकि अभी भी हमें यही लग रहा है कि काफी टॉप हेवी बैटर्स हैं। यानी आपके पास स्मृति मंधना है जो फॉर्म में है, डैनी वायट है जो फॉर्म में है और माया बाउशर है जो फॉर्म में है, लेकिन उसके बाद वो मिडिल ऑर्डर थोड़ी खोखली नजर आ रही है। तो अगर आने वाले मैचेस में जैसे प्रीवियस मैच में हुआ था, एक अच्छी बॉलिंग अटैक के सामने अगर आपका सामना हुआ तो फिर आपको शायद तकलीफ हो सकती है। जैसे ये वाले मैच तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप 16 रन यही लोग बनाए या फिर दूसरे लोग बनाए, उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मानसिक दबाव नहीं पड़ेगा। बट हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई मैचेस में अगर टॉप 2 जल्दी आउट हो गए तो वो नीचे वाले बल्लेबाज आके रन बनाए तो अच्छा होगा, और ये फाइनल्स के पहले हुआ तो अच्छा होगा, ताकि आपको मेन मैच में वो फर्क ना पड़े। 33 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता। बाएं हाथ की बल्लेबाज आई है फ्रेया केम्प बल्लेबाजी करने के लिए, शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट थर्ड, ये 2 खिलाड़ी है, स्क्वायर है 2 विकेट पीछे जो सर्कल के अंदर है। आगे आकर उसे फुल टॉस में तब्दील करते हुए, पुश करते हुए उसे बॉलर की तरफ वेरम ने छलांग लगाई अपने बाएं तरफ, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाई, गेंद गई लॉन्ग ऑन की तरफ और यहाँ पर 1 रन ले लिया फ्रेया केम्प ने। 86 3 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर सदर्न ब्रेव 15 रनों की आवश्यकता 32 गेंदों में। और यहाँ पर बाउशर के पास एक अच्छा मौका यहाँ पर जल्दी खत्म करने का, नेट रन रेट में यहाँ पर इजाफा हो सकता है। और जॉर्जिया वेरम जो एक शायद स्मार्ट वॉच डालकर गेंदबाजी कर रही है, आई एम नॉट श्योर, शायद ओ बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, लो फुल टॉस और इसे पुश कर दिया सीधा शॉर्ट मिड विकेट की तरफ। एक रन लेने का कोई भी मौका नहीं। और यहाँ पर कैंप कह रहे कम ऑन बाउशर, शायद कैंप ने उन्हें कहा है कि आप ये बड़ा शॉट लगा दीजिए और यहाँ पे एक छट्टे डाल दीजिए और छक्का डाल दीजिए, लेकिन नहीं, एक धीमी गति की गेंद थी, लेग स्पिनर बाहर की तरफ जाती हुई, कट करने का प्रयास बाउशर का, लेकिन बीट हो गई। तो 70 गेंदों के बाद यहाँ पर सदर्न ब्रेव का स्कोर है 86 3 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता। Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. We value your feedback and encourage you to share your thoughts through our chat box. Get ready to elevate your fantasy team selection and take your gaming to the next level. Only on the Crick Kong app.
यहाँ पे स्मिथ अपनी बॉलिंग डालते हुए, हाँ, और हम बात कर रहे थे ये भी ऑफ माइक की यहाँ पे एक अच्छी बॉलिंग स्पेल क्या स्मिथ और बेरम की है, और जी हाँ, हम कह सकते हैं वो, क्योंकि वही विकेट चटकाने में यहाँ पे कीपर, और कैचेस भी वही ले रहे हैं। हाँ, और कैचेस भी वही ले रहे हैं। खैर एक क्रॉस की बॉलिंग थी, पर स्मिथ और बेरम की एक अच्छी, मैं कहूँगा आपने जो कहा था ना कि एक मैच से कुछ पॉजिटिव निकल सकता है, तो ये दो प्लेयर्स काफी एक पॉजिटिवली निकले गए सुपर चार्जर्स के लिए। खैर 14 रनों की रिक्वायरमेंट है, और जी हाँ, जैसे हमने कहा कि स्मिथ और वेरम विकेट चटका रहे हैं, यहाँ पे स्मिथ और एक विकेट चटकाते हुए उनका ये कैच एंड बोल्ड होगा माइया बाउचर का विकेट लेने के लिए। शायद वो थोड़ी मैं कहूँगा कि थोड़ी प्री डिटरमाइंड खेल रही थी। आई थिंक वो थोड़ा प्रेशर था कि जल्दी खत्म करना है मैच, वो रन मार रही थी, इसलिए वो थोड़ा आगे आके खेलने की कोशिश की। डाउन द ग्राउंड आया और हाथ में बॉल थमा दिया, पर एक काफी अच्छी इनिंग्स माइया बाउशर की, 31 रन आउट ऑफ 28 डिलीवरीज। और अभी 14 रनों की रिक्वायरमेंट है, हमें देखना पड़ेगा कौन सा बैटर यहाँ पे निकल के आता है, क्योंकि मैच तो खैर जा चुका है सदर्न ब्रेव्स की तरफ, और अभी 14 रनों की ही रिक्वायरमेंट है। तो अभी इट इज अगेन अबाउट विन। और ट्रायन जो नई बल्लेबाज आई है कैंप के साथ, क्लोई ट्रायन, तो देखना पड़ेगा कि फ्रेया कैंप और क्लोई ट्रायन में कौन है जो ये टेल एंड करता है। जैसे आपने कहा कि मिडिल ऑर्डर इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो वो 14 रन बटोरने में कितना टाइम लगेगा उन्हें, वो एक इम्पोर्टेंट चीज रहेगी। स्मिथ की एक बढ़िया स्पेल यहाँ पे 2 गेंदों में हमें खत्म होते हुए दिखेगी, और ये फिर और एक डॉट डिलीवरी, बस 11 रन दिए हैं उन्होंने। तो अगर हम एक ग्रैंड कैलकुलस में इस इनिंग्स को देखें तो एक अच्छी बॉलिंग इनिंग्स रही है, पर क्योंकि उनकी ही बैटिंग लाइनअप ने उनका साथ नहीं दिया, तो इसलिए शायद बॉलर्स कुछ ज्यादा कर नहीं पाई यहाँ पे। और यहाँ पे उनकी स्पेल की समाप्ति होते हुए 25 बॉल्स बाकी है और 14 रनों की रिक्वायरमेंट है। 4 विकेट जा चुके हैं यहाँ पे सदर्न ब्रेव के। Revolutionize your fantasy team selection with our expert predictions and interactive features. Fantasy team enthusiasts are in for a treat as our app offers a range of features to enhance your cricket experience. Our expert analysts provide valuable predictions and game-changing analysis to give you a strategic advantage in upcoming live matches. We emphasize the importance of considering multiple factors before finalizing your team for maximum success. But that's not all. Immerse yourself in the excitement of live commentary and enjoy our captivating podcast. 14 runs needed from 25 deliveries, make that 13 from 24. And I was kind of intrigued. The last few balls which have taken place for the Southern Brave, because they have been losing wickets and the runs have not come quite consistently as well. They are in a good position, 13 from 24, but with 4 wickets done. Oh, make that 5! What a beautiful delivery from Georgia Wareham. It was almost a Yorker, very full on middle and off. Well, Freya came down the track and looked to go inside out, but missed. Well, missed due to the length primarily. She yorked herself and the ball went through to hit the leg stump. 30 needed from 23 is not a problem. But I'll tell you what has happened in the last few balls. We were looking for positives in this run chase for the Northern Superchargers, and I have to say that this is some kind of a comeback from the Northern Superchargers, because after 50 deliveries, the Southern Brave were 64 for 1, and they have lost 24 for 4. Yes, 24 for 4 in 27 deliveries. It's 27 deliveries, 24 for 4. Now that and because 51 to 55, they scored just that was 10 runs. So even 55 is not the right thing. I think from 55. So last 22 balls, they have scored 14 runs and lost 4 wickets. Now that's something the spinners have got into contention, because there is one thing, the runs are not coming at all, and it's now 88 for the loss of 5 wickets after 77 balls. Very full, almost jockeying herself, and gets an inside edge as she tries to drive and hits on the pads. It's now Maitland Brown who has come on to bat. Did not take part with the ball. She's a fast bowler as well.
And a little bit of a worry for Anya Shapsol. Now the leg spinner outside the off stump, punch straight to backward point. No chance of a run. A 13 needed from 21 balls now. Georgia Wareham, she's also ready, almost done to finish her set. 19 deliveries, 15 runs, and 2 wickets. And the final delivery, it's another short ball, leg spinner punch straight to cover. Well, 80 balls. We never thought it would come up to this stage. 80 balls have been done, and the Southern Brave all of a sudden have dug themselves into a deep hole. May not affect them in this match, but it is going to hurt them going forward. And this is some wonderful combination by Lindsay Smith and Georgia Wareham. Lindsay Smith, 20 deliveries, 11 runs, 2 wickets. Georgia Wareham, 20 deliveries, 15 runs, 2 wickets. Together, they have bowled 40 deliveries for just 26 runs and taken 4 wickets between them. And in those combination, in those 40 deliveries, they have bowled 22 dot balls. And now, well, a sight which no Southern Brave batter would want to see, a Southern Brave supporter. Anya Shapsol is walking down the steps with her bat. I don't think she would have dreamt that she would have needed to walk down the steps now. But in case they lose a couple of more wickets, she has to come out to bat because there aren't many batting options there. Luckily for them, the required run rate is not that much. 13 needed from 20 balls, and it's now Jemima Rodrigues ready to bowl her off spin. Shot outside the off stump, and it's a loose delivery, and there comes the pressure releaser. And now it's punched away through the covers for a boundary. 92 for 5, 9 needed from 19 balls. Again, question mark on the captaincy of Holly Armitage. She could have given to Grace Bollinger. Yes, she could have definitely given it to Grace Bollinger. But at the same time, I mean, you have seen that Southern Brave have collapsed their middle order. I mean, we saw that in the earlier game, which was played by Southern Brave, and the match was getting quite close there. Tyrone and Brown were not getting the runs. Why do you need to bring Jemima Rodriguez? At this time, towards the long on region, the ball has been hit. There is a fielder, they would take a couple of runs. And exactly that has happened. Release of a lot of pressure, I would say. A lot of pressure. I mean, there was a time and there was a point where I was thinking that harakiri, the word you used, can that happen again for the Southern Brave? But I think with the wrong captaincy here, it is not that situation as this time. Tyrone goes towards the mid wicket. There is a fielder there, so it would be just a single here. So now 6 runs required of 17. What will Brown do here? It is a match now which has comfortably got towards the Southern Brave. I mean, they have lost the 5 wickets, and this would be a state of concern for them as the batting lineup has been collapsing quite so well. I mean, it was Alice Davidson Richards it was the batting at one point which was looking quite so well with Smriti Mandhana and Danny Watt batting there. Then it was Maya Bowsher. I think it was her I think she thought that she had the responsibility to get this match ending, but she just threw her wicket off to Smith. And now it is upon Tyrone to end this match as soon as possible as they take a single, and that set of Jemima Rodriguez has just lifted all the pressures out of the Southern Braves here. Yes, I'm just wondering why did Holly Armitage give this bowling to Jemima Rodriguez in the first place? She's got 15 balls of Grace Bollinger left and 10 balls of Alice Davidson Richards left, and she's not given the bowling to Leah Dobson at all. So that's kind of an intriguing captaincy, unless Leah Dobson is injured or something. And with 13 needed from 20 balls, and that's the time you give your out of the 20 balls, you give to Bollinger and Davidson Richards, and if it goes in that last set, then you give it to Jemima Rodriguez. Similar to what India-Pakistan happened in that World Cup. Mohammad Nawaz bowled that last over because the captain knew if he got Nawaz to bowl earlier, India are going to win the game quite comfortably. So that's how you look at you use your best bowlers up front, and now this has become just too difficult for Alice Davidson Richards to defend just 3 runs. And there you go. Oh, I think she should give the thank you card to Maitland Brown. That was way down the leg side, and Maitland Brown managed to get back on it and paddled it, and the keeper did well to get to her left and just parry it across and keep the runs to a single. 3 needed from 14 balls now,
as Alice Davidson Richards comes back, 11 balls, 22 runs. Not her day, and not her team's day either. But I would believe that the Southern Brave have kind of made a fist out of this total. They've dragged this into the 86th. That's the 18th set, and that's something which they can be proud of, especially the spin duo of Lindsay Smith and Georgia Wareham. And there are some problems for the Southern Brave as well. We'll discuss that. Short ball, and that's gone to the top edge. This is going to clear the boundary. It does, and that ends. We expected a one-sided match, but eventually the Northern Superchargers have made a fist, some kind of a fist, and that's what we always want. We want some kind of a competition when we go into a match, and that's exactly what has happened. Chasing 101 for a victory, Southern Brave are now increasingly showing us that they might be a team of the top three heavies: Smriti Mandhana, Danny White, and Maya Bauscher. These are the three consistent players who are scoring, but they didn't turn up today. Danny White fell first after scoring 20, and that was after a partnership of 31 with Smriti Mandhana. Then Smriti Mandhana fell for 19 after she had a partnership of 45 with Maya Bauscher. And at 76 for 1, it seemed all rosy. But then suddenly the Northern Superchargers spinner started to come into the fray, and that was Lindsay Smith and Georgia Wareham as the Northern Southern Braves slipped from 75 for 1 to 88 for 5. They lost 76 for 1 rather. So they lost 4 wickets for 12 runs in 20 balls, and that was a period when Southern Brave probably were over defensive, but eventually they got through. The third wicket was in the form of Georgia Adams, as she managed just 3. The fourth wicket was in the form of Maya Bauscher, who played very well for her 31. And then, just to make things interesting, Freya Kemp lost her stumps to Georgia Wareham, who made 2. While Chloe Tryon, they have Chloe Tryon as well, who finished off the game 13 not out from 8 balls, and Maitland Brown unbeaten 2. But they have to think, the Southern Brave, can they split this batting order somehow? Because Mandhana, White, Bauscher, and Tryon, that's all the batting that they have. And after that, they have nothing. And this is going to hurt them. And this hurt them in the previous match, and it almost hurt them in this match as well. Imagine they were chasing 101 and they took 87 balls to score. So imagine if the target had been 120, 125. Who knows? The Northern Superchargers might have even won this game. Yes, they could definitely they had a fighting chance there. The over of Jemima Rodriguez is the one which we would question. And we will be just talking about the scorecard for the Northern Superchargers as well. They came off batting quite well. It was Mary Kelly who came in 39 runs of her 40 balls which she faced. Jemima Rodriguez, not her day. 6 runs of 7. Phoebe Litchfield got out on a duck. Holly Armitage, 21. I feel it was the partnership between Mary Kelly and Armitage that built up most of the runs for them. Alice Davidson Richards got out on a 5. Bess Heath got out on 11. And Georgia Wareham not out for 6. Leah Dobson got out on 1. And Kate Cross bowled by Bell at 3 runs. And Lindsay Smith 2 runs of her batting. Talking about the bowling, it had been the day of the Southern Braves in bowling. Lauren Bell, 20 balls she bowled and 14 runs with a wicket. Anya Shrubsole, what a spell by the captain. 20 balls, 13 runs given and 2 wickets. Chloe Tyrone, 20 balls bowled and 2 wickets for her as well. Clea Moore, 20 balls and 22 runs which she gives, no wickets for her. And Georgia Adams, 3 wickets, a brilliant spell by hers in her 20 balls and just 21 runs that she gave. So it was a bowling day, I would say. It was a brilliant performance by both the bowlers, but in the end, it was the Southern Brave who bested this game and quite nearly won this game. And Rihanna Southby, a great keeper, winning the player of the game. It seems. Yes, she's been awarded the player of the match because she was involved in 4 dismissals. That's 2 catches and 2 stumpings. If I'm not wrong, we'll just clarify that with you. Southby. Yes, so that's 2 catches and 2 stumpings when she was there, and I thought she might come out to bat also if needed. But
Not the best way to win for the Northern Superchargers, but a win is a win. Eventually, they end up winning this game. A look at the points table then as to where do the Northern Superchargers stand after this particular victory. And Northern Superchargers have just moved up to. They have not moved up to the top of the table. They have moved up to number 2 with 4 points from 3 games. Well, 2 wins, 1 loss, and 2 wins and 1 losses in 3 games, taking their points to 4. While Southern Brave have earned their second loss in 4 games. So 4 games, 2 wins, and 2 losses. Oh, did I say the other way? Sorry, I'm saying the other way. I'm sorry. I'm really sorry. Well, Southern Brave have topped the table now. They've with 2 wins and 1 loss, while Northern Superchargers have got their 1 win and 1 loss in 2 games. But they were competitive in this particular game. And mind you, they are still in the top 4 as far as and they have played a game less as compared to the Southern Brave. So they can always learn from this, but they'll be proud of the way they ended this particular game. So that's all from us. This is the pair of Karthik and Shaurya signing off. But the ECS action is not the Crick-Kong action is not ended for the day. Well, we are taking a break, but in an hour's time, we'll have the men's 100 coming up. That is between the same 2 teams, Northern Superchargers and the Southern Brave. That will be covered by the pair of Dhanush and Deepesh. And an hour later, that's around 8 p.m. IST, Karthik and Shaurya will be back for the second T20I between West Indies and India. So it's a cracking day left in store. We are taking a bit of a break for now. See you in a short span of time. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for tuning in. This is your commentary team signing off. Catch you next time with more exciting live match.